Hello, Anuji. Thank you, sir, for being here. Please, if there is any audio issue, please let me know. Last time I spoke for like 1,000 minutes and then... okay, so here, so this is supposedly a church event in Chennai. So this is supposedly a church event in Chennai. Just want to find out what is happening and why are all these pastors who are supposed to be taking care of people doing all these. I don't know the mental health of this lady यहाँ पे जो पता नहीं उसको क्या हो रहा है, दौरा पड़ रहा है, दिल का दौरा कि क्या है. वैसे दिल का दौरा करके एक I want to do a show on दिल का दौरा भी, because मेरे को ये सब कुछ देख के दिल का दौरा पड़ रहा है. So okay, so hello Rocky ji, thank you sir for being here. Welcome. This is rice bag bro. Correct. अनुज जी सही पहचाने आप. So I don't know, दीदी को कुछ दिल का दौरा पड़ रहा है कि पाइल्स का प्रॉब्लम है, लाइफ में क्या प्रॉब्लम है मालूम नहीं है. But just is this supposed to be a healing process? Like क्या है मतलब, just if we don't intervene as a nation, as a humanity, I think बहुत कुछ अनर्थ होने वाला है. दिमाग में दिल का दौरा पड़ रहा है माता जी को. I know, totally. So I'll just send the link if anybody has comments. Let's do I'll do a 1 hour session going for a few weeks now, because there's a little bit of 50 rupees cut over. So Shivansh Kumari, correct. 50 rupees cut overacting ka. Okay. So let's see quickly. I just want to go over a few things that are happening in the world of uncles and aunties, because we need to also find out कि क्या-क्या चल रहा है यहाँ पे लाइफ में. As usual, we know कि क्या होता है whenever two people are showing up, दो hero heroine आ रहे हैं मूवी पे, तो immediately it seems they are in a relationship. Kriti Prabhas are taking it slow before they tell the world about being in a relationship. Report आया है यहाँ पे अभी. Kriti, welcome. So HTCT का न्यूज़ है कि it seems supposedly Prabhas and Kriti are in a romantic relationship. I mean, I'm like, please give me a break, right? So Preeti, welcome yaar. Hello Rachna, how are you? Good. I'm great. So सब ड्रामा होता है ये. I know exactly. यो देवा कलयुग में भी ये सब. What about Anushka Amma? I know. Anushka Amma जब बाहुबली था तब she was having a romantic relationship. तो अभी तो Ayush, thank you sir. Okay, excellent. So yeah, Preeti, how are you? How is life? ये सब देख के दिल का दौरा पड़ रहा है कि क्या है? अरे बस खाना हजम नहीं हो रहा है मुझे. ऐसा मन तो ऐसे ही कर रहा है किसको पीट दूं जाके बस हम. ये मालूम है ना ये क्या हो रहा था? No, I didn't know. Okay, so पप्पू जी को they actually say कि please दिखाइए जो भी. Okay, hold on, let me just do this. Okay, रॉकी जी भी आ गए. Okay, so यहाँ पे हेलो प्रीति जी. हेलो रॉकी जी. पप्पू जी को बोलते हैं कि बुक इनॉग्रेशन में आया हो, प्लीज पलट के भी दिखाओ. तो पलट के दिखाना मतलब कितने फेयर हैं हम लोग, इधर भी दिखाते हैं.
पलट के दिखाना मतलब he Tashreef. Yeah, so I think Ayush, you are the one who taught me the meaning of Tashreef. So, Jyoti ji, welcome, ma'am. पलट के दिखाना मतलब One second. I think there is a little bit of feedback यहाँ पे. Jyoti ji, I think you have to remove your other audio, ma'am. So otherwise it's... नमस्ते Exactly, मैम Shivanshi. Namaste, how are you? Welcome. हेलो चुटकी. अरे यार मेरा शायद हेडफोन लगा है Oh, that's okay. I think now you're okay. गजब तो fuck कबूल. साक्षी कावत जी, गजब नौटंकी करता है ये पप्पू. Okay, so ये पप्पू का उड़ गया वीडियो. बिग बॉस चूज मैडम इसको देख के घबराहट होने लगती है हाँ, ये राहुल गांधी को देख के घबराहट होने लगती है क्या होगा इसका I know. देश को चलाने के लिए रेडी हो रहा है वो भाई साहब. I'm really worried. मैडम Rocky ऐसा and- देश का प्रधानमंत्री बनेगा ना तो मैं पहले जाके सुसाइड कर लूंगी यार इसको नहीं बनने दूंगी एक घड़ी ममता बनर्जी को बना दूंगी पर इसको नहीं बनने दूंगी ये पप्पू जब तक रहे हमारा एंटरटेनमेंट काफी. हाँ, सीरियसली नहीं वो तो यार, दैट्स व्हाई हमको ये सब लोग को ना, मतलब वी नीड टू कीप देम हियर सो दैट दे कीप गिविंग अस एंटरटेनमेंट. तो यहाँ पे देखिए एक मिनट, साउथ इंडियन अंकल का एक बयान है यहाँ पे जो बोलते हैं कि बिग बॉस जो रन करते हैं, जस्ट लाइक सलमान खान इन साउथ इंडिया, ही रन्स बिग बॉस इन टॉलीवुड. ओके, सो नागार्जुना बोलता है कि if you ask me about Big Boss, I will say very negative things, so don't ask me about that. That's what he's saying about the show that he is hosting. Okay, एक बार सुन लेते हैं. And please, anybody can keep talking anytime you want. బిగ్ బాస్ చూస్తున్నారా ఆయన యాంకరింగ్ మీరు కూడా మీలో ఎవరు కోటీశ్వరుడు అప్పుడు చేశారు అంటే యాంకరింగ్ కి ఎట్లా అనిపించింది బిగ్ బాస్ గురించి వద్దులే, బ్యాడ్ గా మాట్లాడతాను. వద్దు. సో యూ డోంట్ లైక్ యాజ్ అన్ యాంకర్ ఆయన No, not about Nani. I don't like the concept of Big Boss. The concept of Big Boss. I don't like voyeuristic. It seems Big Boss is very voyeuristic. You know, you're actually snooping on people doing, मतलब टट्टी कर रहे हैं या कुछ बेडरूम में सो रहे हैं या कुछ खाना बना रहे हैं. You're like basically prying on people's privacy. It seems इसके लिए उसको पसंद नहीं है. Watching what the other person is doing. Then you get their kick and laugh. I don't like these kind of things. It's almost like a gossip. It seems it's almost like a gossip kind of a thing. And Uncle is very popular in South India for hanging out with all kinds of heroines. So as you can see, उसका नया movie आ रहा है Ghost करके, जहाँ पे average age of the heroine is 20 and Uncle का is 65. So you can imagine Uncle is so talented. This is our South Indian संस्कारी Uncle. ये बात जाके जूनियर एनटीआर को पता है ना, क्योंकि वही करता है साउथ तेलुगु में. इसमें एक पिक्चर आपने दिखाई, हाँ ये वाली, इसमें वो ब्लैक ड्रेस वाली वो लकी वाली लड़की है ना जो सलमान खान के साथ आई थी या सोहेल खान के साथ आई थी. So she is like the Aishwarya Rai duplicate or something. That's what they say. में आई थी एक. हाँ, स्नेहा उल्लाल ना, स्नेहा फेविकॉल उल्लाल. का ऐड चल रहा है क्या? So I am definitely sure that she is from North or something, because जब यहाँ पे आई थी, people were like, oh my God, Aishwarya Rai फिर से जन्म ली. Rachna ma'am, she is from Ullal town in Karnataka. Ullal, you know. Oh, so then it is. So she's Kannadiga. Okay. I Yeah, remember. yeah. She's near about Kurg. Kurgi girls are very fair, na. Oh, acha, So okay. near to that Kurg or maybe that South Kannada, somewhere there's a Ullal town basically. So she is Oh, from acha. Ullal town. Oh wow. Okay. Thank you for that. Because Coorg is like the Scotland of the East or whatever. One day I want to go. Opposite rally is a complimentary. पप्पू वाला opposition का ज़्यादा ही complimentary हो रहा है. I know. ये पिक अच्छी लग रही है अनुज जी. Okay, so ये Big Boss का ये क्या कर रही है? Pedananna is getting younger day by day, it seems. Pedananna is full of horniness. He is always ready for chumma chatting. He's like Action. Okay.
So आफ्टर 50 इन लोगों के मैग्नेट लग जाता लगता है, चिपकते ही रहते, काम धंधा नहीं इनको कुछ। अरे प्रीति दी, वो एक फेमस लाइन भी ना इन जैसे लोगों के लिए ही बनाया है कि men and wine get better with age. Oh my god, exactly. what crap. मोर ग्रेसफुल। Sulman Chicha. Oh, are you serious? Okay, Salman Khan found that lady. वो उसकी एक मूवी आई थी ना रशिया में, वो इसको हाँ, बचाता है, लकी नो टाइम फॉर लव। लकी नो टाइम फॉर लव, या No time for love. Oh my gosh, 2005. Jesus Christ. Okay. Actually, Aishwarya Rai is also from nearby. I mean, that nearby region where Sneha Ullal is from, I think. Acha. Oh, So okay. Aishwarya is also Kannadiga, I think. Yeah. Exactly. She's, I believe, yeah. Northern Karnataka, Maharashtra border type, something. I think. Yeah. Wow. Okay. So let's just play another. Nirmala Rani ji, thank you so much for being here. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. Okay. So, oops, ये वीडियो नहीं यार, कहाँ पे गया है ये? Let's see. Okay. So ये ब्रह्मास्त्र अंकल का 1 second सुन लेते हैं. He is the Manoj Desai guy who is talking about how he had to pull out a few of his screens for Brahmastra, but Brahmastra which is supposed to be a mega blockbuster, right? तो यहाँ पे देखते हैं अंकल का क्या बोलना है. दिस इज ब्रह्मास्त्र, सबसे बड़ा शस्त्र, हाँ. और इसमें बताया भी है रणवीर को कि वो आग में हाथ डालता है तो भी उसके हाथ को कुछ नहीं होता, उसके पास वो जादू है. और ये सब कुछ होने के बाद अचानक लव स्टोरी पे चले जाना उसका और आलिया का समझ के बाहर था. कंट्रोवर्सी इतने हद तक थी कि दे वेंट टू उज्जैन और उनको महाकाल के दर्शन करने नहीं दिए, क्योंकि मालूम नहीं ये स्टार लोग क्यों बोलते हैं. मैंने पहले भी तुम्हें इंटरव्यू दिए है. उसने बताया था कि मेरे को बीफ बहुत अच्छा लगता है. एक गौ मांस वाले तो वहाँ एंटर हो ही नहीं सकते. सर ये पुरानी कमेंट है, बहुत पुरानी बात जब ये कमेंट है पब्लिक ने पकड़ ली ना, वहाँ बजरंग दल के ही आदमियों ने उनको अंदर जाने नहीं दिया. दुख की बात है, मुझे कोई खुशी नहीं मिल रही इसमें. But basically, so basically he is saying why did you actually make this into a romantic love story kind of bullshit when you're supposed to be just talking strictly about like astras ka evolution या whatever, right? So यार ये अंकल जी पे ना मुझे 2% भी भरोसा नहीं रहा. ये लाइगर के लिए भी ऐसी गाली दे रहे थे, फिर उसके 5 छुआने लगे. ये अभी 2 मिनट में राजीव उसको अपना गले लगाने लगेंगे. आलिया भट्ट के उसमें बेबी शावर में जाएंगे. नमा नौटंकी आदमी. आलिया भट्ट का बेबी शावर. हाँ, इनका भरोसा नहीं है. इसीलिए उजरा चमन हो गया. जब आपको पता था लाइगर के साथ क्या हुआ, आपने क्यों लिया उनका वो मूवीज? नौटंकी. But ये आदमी ने अपना भरोसा खुद ही पैसा कमाना है इसलिए नौटंकी की बाजी करते हैं लोग. महेंद्र शर्मा जी, वेलकम सर. हेलो. ये अंकल कुछ ज्यादा ही उछल रहे थे तो बीबी आके पीट के उसको लेके गई. वो तो दिस इज नॉट जस्ट इन इंडिया, इट हैपेंस ऑल ओवर. So कोई फेस्टिवल में गया था, अंकल इज फुल हैप्पी. Oh, Sara Ali Khan. हाँ, Sara Ali Khan. Thank you, Rocky ji. I think I can see. I have that video. Sara Ali Didi is full. मतलब थोड़ा ज्यादा ही रब कर रही थी सब अंकल्स को. खड़ी भी नहीं हो पा रही थी ठीक से. So yeah, I just wanted to say कि अंकल्स मतलब हर जगह के अंकल्स बेचारे. Okay. So यहाँ पे पता नहीं लड़कियां क्यों अपनी चोटी को खींच रहे हैं ऐसे, मतलब क्या डांस मूव है ये मालूम नहीं है. थैंक यू सर. धर्मा जी, थैंक यू फॉर ऑल योर कमेंट्स, रियली अप्रिशिएट दैट. जैसे बॉलीवुड का आदमी है. Yeah, we saw him pallet. Yeah, makes sense. काफी आनंद आ रहा है. अनुज जी, डोंट ट्राई इट एट होम, इट्स इंजूरियस टू हेल्थ. आपने देख लिया ना, मतलब Injurious to body parts and bone joints also. अनुज जी 2 वीक से आनंद ले रहे हैं.
वाइट कहाँ है उनकी? अनुज जी आएंगे, एक बार आएंगे StreamYard में Black जरूर Day. आपसे। हाँ ब्लैक डे. इसमें Black Day. ना एक बार आप कभी भी इन गान आजकल के जो गाने हैं ना उनमें नोटिस करो, द फ्रंट लाइन इज ऑलवेज द फिरंगी पीपल, द बैक नहीं, लाइन इज सर्बिया ऑलवेज द का इंडियन गर्ल्स. तो ये all बहुत these, सारे गानों में. yeah, all our Gulti folks, all our Telugu folks actually go to Serbia, Russia, and all those places where you can get Gori Chamdi for lesser amount of money, right? Like than in the US and Europe. And तो वहां से आंटीज को लेके आके, so literally from the past 15 years, all the extra dancers in any of our dances has never been. That's why the day laborers जो थे, extra dancer guys and girls have taken a very big hit. Now they don't have any jobs because all these artists have come from दूर से, and they're हाँ, और doing फिर all यही these. लोग बोलते हैं कि अब मूवी देखो, सिनेमा इंडस्ट्री में कितने लोग टीम में काम करते हैं बेचारे, वो बिजनेस उनके पास पैसा नहीं है. Yeah. कितना अक्षय कुमार क्या बोल रहा था, वो पर डे Exactly. बेसिस पे काम करते हैं. और तो यही लोग हैं जो आधा फिरंगी ग्रुप रखते हैं. exactly all the technicians. अभी VFX का भी काम बहुत सारे बाहर के ही लोग कर रहे हैं ना यार. मतलब then how मैं are you वही बोल रही supporting हूँ, the, these are the yeah, hypocrite people. ये बाहर के लोगों को काम देते हैं, अपना पैसा निकालते हैं और फिर मूवी देखने के लिए हमसे कह रहे हैं कि उन बेचारों के पास पर डे का पैसा नहीं है. yeah, exactly. Ukraine, Russia. Ukraine. Yes. Thank you, Jitendra. That's the Serbia. Ukraine is the most number of people that are employed. Yes. Ukraine, Russia, America, Armenia. यहाँ से ज्यादा आंटी यहाँ से ज्यादा आंटियां आती है. आर्मेनिया. Yes, absolutely. तो अंकल, सो दादाजी को लेके ये साउथ इंडियन दादाजी का भी वाट लग गया है. He was supposed to be on Dashera. He wanted to release October 5th को उसका मूवी जो Godfather है, and अभी there is no distributor that is available to buy his movie. So you can see सलमान जी का रावण जलेगा रावण जलेगा, सबको बटेगा वाली हाल हो गई इनके. Exactly. तो ये मूवी, ये सॉन्ग लॉन्च हुआ था लास्ट वीक, 2 weeks ago on Dadaji's birthday, Chiranjeevi's birthday, and he released it exclusively on Spotify first. 5:05 पर रिलीज करना था उसको, but he released it 2 hours late. They released it 2 hours late, so पूरा all the mega fans were like so upset and everything. So he has been getting trolled left and right for the past 2 weeks. So yeah, Dadaji is full. Yes, like yeah. Dadaji is dancing with another budau. So obviously we have to troll them. It is our dharma, right, ma'am? Yeah, exactly. Yeah. So this is somebody from Chiru fans. He's a Chiru fans correspondent, and he have a district-wide Chiranjeevi fans, Vijayanagaram. So from Visakhapatnam area, that area, he is cataloging all his previous things, and he has posted it on Twitter. So it seems this Dadaji back then was bigger than Bachchan, and he gets 1.25 crores. I don't know ye kab ka hai. He also started a political party, but failed miserably, right? He merged with Congress and then quietly, made an exit. Exactly, but unfortunately, uska brother is now slated to be in the. So ye thoda BJP and all these people are playing a game. Jahan pe they are trying to capitalize on Pawan Kalyan. They're going to do a merger kind of a thing and do something, sir. So they are still very much in power. They are going to be very soon. So there's some shit happening there. Yeah. In Telangana, not Andhra Pradesh. Yeah. Okay. कोई संभालो दादाजी को. So bigger than Bachchan, it seems उसका इंटरव्यू में एक पेज है जहां पे उनको अपनी सक्सेस से डर लगता है, because he is going to get so bigger and bigger. ये this was when he was 37. तो मतलब let's see, this is 30 years ago, I think. That's when he used to make 1.5 crores movie. So he is asking यहाँ पे, is Amitabh Bachchan your role model? Not in the least. I'm not imitating him or anyone else. My style is my own. Amitabh Bachchan was called Lambu. Rajnikant was termed too dark, and I was told I looked like a villain, it seems. So this is
This is Dadaji back in the day. So Dadaji का हो गया, खत्म करो. Yeah, so this is his look. So Ravi Krishna Didi ka last week we saw the look, right? So this is his look. वो गधे को घोड़े को घुमाता रहता है और cowboy style कुछ कैप पहन के. Can you imagine 40 degree weather में uncle is doing whatever it takes to keep his cool and run around aunties who are wearing even shorter skirts. तो ये था उसका style, and this was our romantic hero version when we were growing up. So you can imagine how woke we are. Ma'am, actually, in the phase these guys became hero, we desperately needed some society building activity or some kind of an activity which could make ourselves in a position where we could reclaim our nation. Being slave for so many centuries, we needed somebody. Even in cinema, we needed that. But ये ugly, cheap copy, romantic films, I mean, this is all across languages, as I told before. नहीं, सी वेस्ट को कितना जल्दी से अडॉप्ट करके कितना कूल बन सकते हो, इतना तेरा पॉपुलैरिटी है, तो दे आर लाइक मतलब yeah, it's just sad. Ma'am, but I think na what they think ki to write a script and to produce a movie is like reinventing the wheel. So why not copy and paste a content that is already hit? Exactly. They don't understand that creativity is reinventing the wheel every time. So Godfather is one second. I'll tell you the name of the movie that is right now we are talking about. Godfather is a copy of. सर रॉकी जी, उन लोगों को भी पता है ना कि टेढ़े मेढ़े मुंह बना के जब आमिर खान खड़ा हो जाता है तो पीपल लाइक इट. शाहरुख का सलमान खान जैसे शर्ट उतार के खड़े हो जाते हैं, दे लाइक इट. तो उनको क्रिएटिविटी से क्या करना? अरे सलमान खान ने शर्ट उतार दिया. आमिर खान का दूसरा स्ट्रेटेजी है, वो बस कान खड़े कर लेता है. हाँ, नहीं, कान खड़े कर लेता है. उनको ये समझ में आ गया कि इनका एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी पीपल लाइक है. जैसे अक्षय कुमार को हर सोशल उस पे रख दिया है उन लोगों ने. पीपल स्टार्ट लाइकिंग ऑल दिस थिंग. तो उनको फिर क्रिएटिविटी गई तेल लगाने. जब आदमी को यही पसंद आ रहा है तो कॉपी पेस्ट मारते जाओ. और ये कितना हाउ शेमलेसली these people go after money. अभी वो सैनिटरी पैड्स का एड में था अक्षय कुमार की, असली बहादुरी फूफू करने में नहीं है, ये देने में है. तो व्हेन आई सॉ दैट गुटका एड, आई फेल्ट लाइक आस्किंग हिम दैट असली मजा फूफू करने में नहीं, गुटका खाने में है. क्यों? I know. No, he got trolled rightfully so for all that. But okay, so I just want to show you a little bit about these uncles here. So यहाँ पे Godfather जो movie है, which is under the production of Kunidala production company, which is Chiranjeevi's production, where he is. Somebody got kicked out of the meeting. Okay, so Preeti, I think her internet went away. But okay, so I'll just show you. This is being produced by his son, obviously their own production company, right? But this is the movie remake of of Lucifer. So Lucifer का क्या है कि OTT में every single Telugu person who is a movie buff has already seen the remake version of the dubbed version of this in Telugu. I don't know why they have to now immediately go and make a remake of this shit, along with Salman Khan as the special agent. Arman Singh या something he is there. तो I don't know why ये money transfer का कुछ है कि पता नहीं, but Lucifer is like so vivid in everybody's memory because अभी तो उसका dubbed version आया है and everybody has already watched it seems. Some of my friends have already watched it, so they're like, what is the point in Chiranjeevi making this movie? So nobody knows. So I'll just give you one more thing about Mohanlal. I will expand on his thing a little bit. I'm editing the video still, but I just want to give you an information on Mohanlal. Mohanlal is single-handedly, matlab Kerala ko, if you see anybody dressed top to bottom in gold, we can credit Uncle Ji on it. Whether you have paise to eat rice or not, you will end up buying shitload of things because वो मलाबार से गोल्ड खरीदो बोलता है, ठीक है, मलाबार गोल्ड करके चिल्लाता रहता है. And the next advertisement में he says gold सब कुछ खरीद लिया, why are you keeping it at the home? Go take a home gold loan from Manappuram Gold.
okay, and buy whatever you want. Gadi kharido, ye kharido. So he is a full-time tatti businessman hai, where he is like making all these people get into EMIs and get stuck into EMIs when they can't afford this shit. So Mammootty is another big time. I mean, मेरे को गाली आ रहा है, but yeah, as all these people, this is a Malayalam hero, super mega, some like people just worship him like God. So these are the stories of all these guys. But I will show you Manappuram Gold and Malabar Gold. It's like a racket. Okay? It's just so funny. Yeah, please, you can talk. Jyoti ji, please, you have not been talking. You are welcome to speak. Wow. Oh, Shivam ji, is this true? That's amazing. हेलो, Hello. क्या बोलते, सुशांत सिंह के लिए एक गाना गाना चाहते हैं। Yeah, please. ठीक है। Okay. खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। अंजाम है तय मेरा, होना तुझे है मेरा, जितनी भी हो दूरियां फिलहाल है, ये दूरियां फिलहाल है। हो गया। Thank you so much. That is amazing. Any day any minute I can like just scroll through his childhood pictures and his just yeah. Thank you so much, Jyoti. You just changed the mood and uplifted the whole mood suddenly. मैं थोड़ा सा घबरा गई थी, वरना मैं बहुत अच्छे से पूरा गाना याद है मेरे को, पर थोड़ा फर्स्ट टाइम किसी और के सामने गाया ना, इस वजह से। No, don't worry. This is good. We'll do a session soon on SSR, and then you can sing as much as you want. And Rachna ma'am, please ask Chutti to record a song and then send it to you. Yeah, so that's even better. On your channel. Yeah, please. You're welcome to record, and I'll make a collage of all the photos, and I can upload it along with your music. Please. Okay, ma'am. Okay. Yeah. बिल्कुल। आप मुझे, मैं कैसे सेंड करूंगी पर आपको? No, I'm just putting my phone number here. If you can add it like via WhatsApp or something, you're welcome to do that, please. Yeah. Okay, ma'am. Okay, thank you. And okay, so let's just go back to our thing where we were working on. Okay, so I just wanted to say, please let's not blindly also follow all our South Indian idols also. They're not Doodh Ke Dhule, and there's a lot of shit going on in the background. So let's go back here. Okay, so Dadaji ka just wanted to pull some angry young man look. So he was our angry young man. जो बच्चन टट्टी साहब है नॉर्थ में, ये था हमारा एंग्री यंग मैन। ठीक है, तो so okay, by the way, I just suddenly remembered this. If you remember, we did in the past this kind of a show where we showed ki this kind of a banyan is called a wife beater banyan. So this Sunny Deol, cheap imitation. Yeah. ये मीनाक्षी शेषाद्री है शायद, कुछ तो भी हिप रिप्लेसमेंट का सर्जरी करवाना पड़ेगा इसको दीदी को। बट yeah, so there are so many memes, I can't even tell you guys. I've never seen this kind of anti Chiranjeevi thing ever in my life, and it's amazing. There are so many memes now. It seems Brahmanandam is our he's a comedian in Andhra Pradesh, and it seems you copied my strill, bro. That's what. This is amazing. Ma'am, but why people are again bashing Chiranjeevi? I mean, any reason for that? No, they are not liking the whole Salman Khan cameo thing or the special agent appearance in that, and also they're a little frustrated ki we are in Telugu also, we are consistently only making remakes of Malayalam movies and Tamil movies and all that, and no originality. The second problem is Chiranjeevi has not given a hit in like 5 years or something like that, because he's extremely pathetic, poor
movie like storylines. So it's people are just like mega fans are like we are waiting, and like what are you doing kind of. So it's like Ma'am, so two things. So first of all, people from North, lot of people from North think that Bollywood wale are copying movies from Telugu cinema. So that actually clears the air somewhere. Whatever you said. Secondly, these Chiranjeevi and these folks, do they live in their bubble, or they are into some kind of a jungle completely cut off from the reality? So they don't understand. I mean, how much hit. I mean, the Bollywood people are getting so much of abuse these days. It's like it's a पैसे career. Yeah. या पैसे के लिए मतलब I don't know, they just see for example this Drishyam movie, which is the copy of the very biggest Malayalam. Exactly. So that is a copy of this. People watched this and they also watched so you North India mein people have watched the original dubbing, then they watched the Telugu dubbing, Venki fans, and they also watched the Hindi version with Ajay Devgan. So it's like crazy. There's like literally no originality anywhere. Matlab, So only Malayalam people came with the original content. Malayalam, there are some see, but unfortunately Malayalam ka we cannot just take it and put it directly because yahan pe flop honge. You have to add one item song where at least the girl is only clad 10% of the body. You have to add 17 scenes where everybody is killing every single person on the screen except the hero. You have to add like some 10 formula items to the Malayalam movie, which is very gripping, very solid, very good storyline, and you'll have to make it a masala bullshit thing. Only then it will sell in Telugu. So unfortunately, No, ma'am, no doubt. The source of knowledge is Kerala and South India. Adi Shankara also came from Kerala, right? Yeah, absolutely. Really, that's amazing. Yeah. But I'm thinking Salman Khan, he started from the north, so he will get released out of India like 30 from Sri Lanka. That's what I keep thinking. Because usko to pura south ghus gaya, we Andhra Pradesh mein, then jayega Tamil Nadu, Kerala, and finally excreted like Sri Lanka or something at the bottom. So I'm just waiting for that to happen. But sorry. Nitin Reddy, I think he's a good actor. I have to check. Nitin Reddy, is this the guy with the Kartikeya thing? I'm not really sure, Anuji. I unfortunately don't have an opinion one way or the other for this. I just don't actually watch a lot of movies, so yeah. Okay, but I'll check. Okay. So after watching Godfather teaser, South movie fans be like, it seems, "Arey baapre, kya bawal teaser hai." This is actually, in fact, wrong. This meme is not correct, honestly speaking, because the graphics in that is just so horrific. People were like, does he even care about his brand anymore? So there is a song that came recently. So this girl. So Mar Takkar Mar is the song of Salman Khan and Chiranjeevi, which was released exclusively on Spotify, and now it's on YouTube, I think, because people were like Spotify nahi hai karke gali de rahe the, so they released it on YouTube finally. Takkar Mar ka songs already, all the dance teachers have already started teaching their children, and parents are already uploading movies. Excuse me. Rashna ma'am, I want Preeti Di comment on this one, especially children dance. पढ़ेंगे गाली पेरेंट्स को भी. Preeti, right? I mean the way she's dancing, like we are against this particular content, this particular style of dancing. We are against. I hate this totally. मतलब I don't support this kind of फालतू की चीजें. Objectify your children and actually post. Yeah. जो स्पेशली आपको सोशल मीडिया पे डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देयर आर लॉट मेनी रॉन्ग पीपल हु आर वाचिंग दिस, और फिर आप बोलते हो कि आपके बच्चे कहाँ चले गए, कि किसने छू लिया, नहीं किसने, हरकतें खुद करते हो आप. Yeah, unfortunately. So Takkar Mar आया, and then immediately I started seeing social media में, मतलब Instagram में, Twitter में, I'm like, क्या हो रहा है भाई? Parents are idiots. ये आजकल ना बहुत ही
बहुत ही कॉमन आइटम है। मैंने वो भी देखा था, वो झुकेगा नहीं का भी आया था। जैसे पागल ही हो जाते हैं लोग, पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है उन पागलोंपन से। And Rachna ma'am, there is no content, except for that very vulgar kind of hip movement. There is no real dance. The ladies are coming up with no dance moves. There, I mean, you go through Insta reels. That Kacha Badam, that reels on Kacha Badam. You remember that? So a lot of tutty came on Instagram suddenly. So that's why Instagram suddenly started stinking. Exactly. And this is an actual screenshot from the trailer, guys. I did not create the graphics myself. This is the actual graphics. वो ऐसे बैठे हुए हैं. Supposedly they crash into a wall and they are going to go into the room where all the thugs are there. But यहाँ पे this is the graphics and people are like ये मतलब ₹5 का है क्या ये graphics करके people are like just showing. Look at that VFX, ma'am. They've made Salman's face so lean. This is like Salman of early 90s, late 80s. Exactly. And these are just photos. These are like there are no expression as they're coming through the thing. So they're like people are like. ऐसा लग रहा है एडिटिंग फोटो है। ऐसा लग रहा है एडिटेड फोटो है, चेहरा बस चिपका दिया हम लोगों का। Exactly. They're like it's not motionless, and on top of that, the graphics around them, the brick wall that they're breaking, वो कुछ मतलब बकवास। Yeah, HPT. Unfortunately, yes, यार मेरा it's. Some videos are getting blocked and all that. We are trying to see. There is another channel called Kapur Saab, where we have all the backup full-length videos of that without any copyright. So I have to update all my videos with that information. Unfortunately, but why, ma'am? Last session was good. I didn't find anything copyright-related thing. Did you play any video or something? I don't remember, but it was good session, ma'am. Yeah, thank you. नहीं, so क्या होता है ना कि मतलब if you play anything more than 7 seconds, they'll get flagged, sir. So that's the problem. So anything more than 7 seconds of the original content, they'll but it's okay. It is what it is. So right now चिरंजीवी का state यहाँ पे ऐसा है कि उसको लगता है कि कुछ लगने वाला है उसको because उसका मूवी बिक नहीं रहा है and he promised all his mega fans that दशहरा तक रिलीज हो जाएगा, सब मतलब ये हो जाएगा, बट सलमान चाचा की वजह से बहुत कुछ झेलना पड़ा उसको। हाँ, तो भस्मासुर के साथ हाथ मिलाओगे तो यही हाल होगा, फ्लॉपी होगा मूवी। सलमान खान को लेके कर दिया। Exactly. So this is an event they did for promotion. So 1 second. और यही भाई साहब ने जितने भी भाई साहब लाइगर ब्रह्मास्त्र के टाइम खड़े हुए थे ना, भाई साहब और बहनें, सबकी लगानी है। अनुज जी, ओके, सो आई नो, नहीं सबकी लगने वाली है। अनुज जी को मैं इतना कहूंगा कि शौक लगने वाला है। So यहाँ पे so here I just don't know yaar. So the thing is, the problem is I'm just so happy and proud of Indians just across the board, because I feel like just because everybody was trying to drum up ki South India movies ये वो, लाइगर को लेके बस डाल दिया नॉर्थ इंडिया में एंड इतना भयानक failure हुआ है। I'm just like so happy कि people did not fall for the narrative कि South Indian movies, South Indian actors are all golden and all that shit. So अच्छा, लाइगर का जो रिव्यू कर रहे थे कुछ YouTube चैनल है, नाम नहीं लूंगा मैं, शायद कॉपीराइट का इशू आ जाए, कहा लायन प्लस टाइगर इक्वल टू लाइगर और हीरो की शक्ल चुकंदर जैसी। Yes, ma'am, you're all right about the feedback. Some of my Telugu friends who are first show guys, so they actually told me that we came out of theater abusing the movie. So I was very happy to get this feedback, and I told them that don't watch this Tatti director again. But you know, ma'am, what's the best part? The cinema overall, we are getting this feeling that cinema is not divided based on the language. They all beneath the whatever cover we see, they are all united,
and we don't know. I mean, the relationship nowadays we see this may have built up over years. It can't be a one day or 1 month thing. So the relationship may have over years, because you go everywhere. It's easy money in the movie, right? Exactly. So see, this guy, this face. Okay, so he was my mom's hero, right? Like when my mom was younger, when she was going to the movies, that was when he started. Matlab, abhi, my kids are actually actively going into movie theaters and watching movies. So even now, if he's a hero, I think there is a problem. Same with this guy, right? Like he is looking like he's going to like fall off the earth tomorrow morning. Matlab, kab tak rahega yaar hero ki tarah? Matlab, yaar, bachao mujhe. Ma'am, he acted opposite Disha Patni, right, in that Radhe film. Yeah. So somebody pulled up that info that Disha Patni's father is younger than Salman Khan. Akshay Kumar ka bhi, I did that, right? Akshay Kumar, when he was 27 or something, I put a Manushi, some Manushi Chiller, whatever that girl's picture as a baby. They are both actor and actress. Yes, Prithviraj Mein, yes, exactly. So that is the kind of thing they do. 1 second, let me look at this. So Ayush just sent me something like a review. अनन्या की ये फिल्म बनानी ही नहीं चाहिए थी, कट गया रिव्यू. अभी एक और में आ रही है अनन्या. और ओके, दूसरी मूवी में आई है क्या? ओके, so 1 second, let's try to लाके आपने ऑडियंस जिंगल नाम है उसका भी. जिंगल, ओके. ड्रीम गर्ल करके नाम है. उसमें कौन, वो एक सिंगर है ना, आयुष्मान खुराना. Oh my gosh, okay, that another outsider. अभी ट्रेलर आया क्या? चुटकी आज ही ट्रेलर आया शायद. ट्रेलर नहीं आया, बस उनकी जो पोस्टर रिलीज हुआ है. रचना, Rajkumar Rao, Ayushman Khurrana and Kartik Aaryan. Don't tell them outsider, please. Oh, Ayushman Khurrana is also love Karan, so please don't say outsider to them. It hurts me. Okay, I'm not here to hurt your feelings. नहीं तो एक सेकंड इसका I will try to edit this. टाइगर को जोड़ के बनाया लाइगर, और चुकंदर जैसी शक्ल वाले विजय देवरकोंडा. He's supposed to be gold standard, say. He's supposed to be like super hot. Like even my Kannadiga friends, my Tamil friends, my North Indian friends, they all are crazy about this guy. तो और घटिया एक्टिंग की माउंट एवरेस्ट अनन्या पांडे को मिला के आपने ऑडियंस को बनाया. ओके. ये अंकल कौन है? I will have to स्टाइल देखो. मेरे को लसित मलिंगा याद आ गया. Okay, I'll check that. Thank you so much, sir. शॉर्ट में दादाजी का उम्र बहुत लंबी है, I know. दादाजी और बड़े दादाजी को देख के ना कॉल करने का मन भी नहीं कर रहा उनको, जिस तरह से वो दिखा रहे. अभी इनका बेटा इनसे बड़ा दिखता है. बेटा भी इतना बड़ा हो गया है इनका. चिरंजीवी. मार टक्कर मार. So this is the song, and look at the dance moves. Dadaji is, because he cannot hillify or dhullify his hips or his body, all he can do is fingers. Okay, so he has. अरे दोनों अगर कमर हिलाने लगे तो हड्डी के डॉक्टर को ना बुलाना पड़ जाए. फिजियोथेरेपी लग जाएगी, है ना. उन लोगों पे रचना सूट भी नहीं करता, पता है? ये सब तरीके का पोर्ट्रेट सूट ही नहीं करता उनके ऊपर. अरे इन दोनों से भी एजेड ना, जिम में आके देख लो अंकल जी, सबको इतना बढ़िया एक्सरसाइज करते हैं, और इन लोग का देखो 2 मिनट में इनकी बोल खुल जाए. दिख रहा है अंकल जी को योगा के आगे पीछे हाथ हिलाने के अलावा कुछ कर नहीं पाएंगे अंकल जी. एंड आंटी सर छोटी कमाल है. ये आंटियां जितना हिला सकती हैं हिला ले, अंकल जी कैसे हाथ हिलेंगे दोनों के. इनके अपोजिट में कौन है? लड़की कौन है इनके अपोजिट में? I think Nayanthara. That is the lady. She is another Nayanthara. उनका अजीब औरत है वो, सच में. 70 साल के बुजुर्ग आदमी के साथ रोमांस करती है. तो जितना हिला सके इनको बैलेंस करने के लिए.
ओ भाई, why did she meet her? Hold on, नयनतारा. हाँ, ये कब हुआ भाई? ये सब होते क्या नयनतारा है मीट रचना? चाची जी. चाची जी. मालदीव्स में मिली होगी वेकेशन में. I know. Auntie is full of like self righteousness. She's just like charity करती रहती है, बच्चों को खिलाती रहती है. Every बेटा कहाँ birthday है? पे. हाँ? बेटा मुंह बोला बेटा. कौन है? बेटा I कम know. बॉयफ्रेंड. Yuck, yuck, yuck. I know. Thank you, HPT. Please, yeah, appreciate that. Let's see. कौन दिखेगा flop है? I know. Okay, so वो हो गया. Let's go back to. Okay, this song. Okay, so और अंकल्स क्या क्या कर रहे हैं? So this is what I was saying. Ghost करके एक मूवी रिलीज हो रहा है अंकल का. It seems वेगम means speed in Telugu. So Vegam is the name of the movie that has a song that has released on 16th September. I just want to play this video of uncle where Wrong with these people यार. Seriously, इनकी ऐसा बेटी problem की क्या उम्र है की इनकी? लड़की है वो, जिसके साथ इन लोग पिक्चर बना ले रहे हैं. सच में यार, ना इनको खुद को भी ये पोस्टर देख के शर्म नहीं आती है. I know. अभी उनकी बहू इसके बराबर है जिसका डिवोर्स हो गया है. Exactly. But वो उसके साथ भी रोमांस कर जाए, कोई भरोसा नहीं. Exactly. They just want to, yeah, we don't know what happens behind closed doors, but They don't want to accept they are old. yes, exactly. प्रीति दी आपने बिल्कुल सही बोला. जवानी ढल नहीं रही है इनकी. डाउट अबाउट इट. ये सलमान are खान, ये लोग they- खत्म हो जाएंगे जिस दिन इनको लोगों ने इग्नोर करना चालू किया ना. दे विल बी ट्रैश बिकॉज इनको And- वही चाहिए. ये एंड ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना प्रीति दी इज द एक्चुअल आई मीन द राइट वे टू यू नो एग्जिट द एंटरटेनमेंट. तो रेखा भी अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाई है कि वो उमराव जान. अभी भी उमराव जान की तो बहुत दूर है. अभी ये तो उमराव बहुत जान. दूर है. वही नहीं उतर पा रही है नीचे सीढ़ी से. अभी वो एक आपको जितेंद्र, मेरे को थर्ड नाम समझते ही हैं. नाम है. आप जितेंद्र को देखिए, उतरना ही नहीं चाहते वो अपनी लाइफ में नीचे. रेखा दीदी को तो वो मलाइका अरोरा की तरह खड़े हो जाए. रेखा दी क्या दिखाती है रचना. सीरियसली व्हाट द हेल इज दिस. नहीं, रेखा जी का एक ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट का एक फोटो निकला मेरे को. So I was like, okay, this has to be like क्या क्या पकड़ के वो सीढ़ी के ऊपर आई. I'm so sorry. Okay, so let's do मेरा. Okay, I just want to show you guys the Ghost का trailer release. Okay, literally this is what it is. स्टंट्स के टाइम में जब ये लोग चेहरा नहीं दिखाते ना तो मुझे बहुत गुस्सा आती है. दिखाओ बस ना, सब कर सकते हो तो. अभी करेगा. और सिर्फ हाथ हिलाने भी उतने ही रहने दो यार. ये काटने के बाद में ऐसा चेहरा. सबको मार दिया, 15 लोग को मार दिया, Body हो double. गया. एंड आई मीन लाइक व्हाट इज द पॉइंट? आई डोंट और फोन अंडरस्टैंड. देख रहा भी मारने के बाद कैमरा ये भी दिखाना चाह रहे कि हम कैमरे को देख रहे हैं. आई नो. Ma'am, Yes. about Nagarjuna, no, that song, I mean, from the movie Criminal, I was a kid when I heard that song. I Yeah, was really yeah. fan of that song. Tu Mile Dil Khile was. Yeah. Telugu हाँ. wasn't even very उसका वो beautiful. गाना बहुत प्यारा लगता था. Yeah. It's I mean, yeah, तब से ही मतलब आंटीज के चुन्नी गिरने लगे because that's what they thought कि that is what romancing is, and public में भी मतलब they just started doing all kinds of shit. आज भी उनकी लाइफ क्रिमिनल पे अटकी हुई है. Right. Somehow they're trying to upgrade, but it's not clicking in their head that how do we upgrade actually. So अभी कपड़े छोटे होते जा रहे हैं, वल्गैरिटी बढ़ती जा रही है. लुक एक सही दिखता है, कभी चेंज नहीं दिखेगा. Yeah. I don't know. Yeah, they're just. Oops. Sorry, sir. I have to talk about this uncle also a lot because आजकल uncle is talking so much of bullshit along with उसका संस्कारी वो पना जाग गया है. So from बेटा आ रही है ना. from जन्माष्टमी से लेकर 2 महीनों से इसका मतलब पूरा. कल को तुम सबके लिए करवा चौथ भी रखेगा. I know.
So this is also one more scene from a church. It seems the girl is blessing here, as we saw. This is मतलब इतना स्टंट करने के लिए 5 रुपए देते हैं कि 50 रुपए? I don't understand. मतलब ये These four guys are dancing in sync, ma'am. Did you notice that? I know. And this is as you can see, Punjab में they are going and en masse they are converting, right? Like अभी आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया. Now they are like doing all these kinds of things in middle like of nowhere in Punjab and all those poor places where people are just so gullible and naive. Yeah. No, I mean, it's not gullible, ma'am. It's a bought crowd, basically. They are bought with money. And I mean, you can buy people with money around the world. That's not a big deal. But अभी किसी ने एक सही comment किया था, ma'am. Sometime back, I read it on some social media that what are these pastors doing in a secluded place? Why these guys are not hitting the hospital? It's the place where these healers are needed the most, right? That's an interesting observation. अभी जाएंगे आपका टिप लेके. God. धोनी की तरह रिटायरमेंट क्यों नहीं लेता? ये अमिताभ बच्चन, 3 खान, अक्षय खान, सचिन तेंदुलकर दोनों की तरह रिटायरमेंट क्यों नहीं लेते? आई नो. प्रणव कुमार जी ये कैसे पकड़ा है? पैसे बड़े बड़े बिजनेस करो, बुढ़ापा में ये सब. आई नो एग्जैक्टली. नहीं एग्जैक्टली इतने पैसे एग्जैक्टली दे कैन डू सो मच ऑफ बिजनेस एंड गेट अवे फ्रॉम आवर लाइव्स, राइट? Charmart Nagarjuna doesn't get old. Have you seen trans? It shows how they do it. Yeah, exactly. हाँ, एक ही तरह के कपड़े पहनो और जस्ट करो. ओके, सो यहाँ पे कोई मूवी में जो भी करते हैं पब्लिक, उस तरह का कुछ देखा है? और अंकल वाज ट्राइंग दिस इन हिज रियल लाइफ. देखते हैं नतीजा क्या हुआ. That's right. That's reality. Movie versus reality. Stay away from BS. ये मैं देखती थी जब, मुझे याद है जब when we were in college and हर लड़की चाहती थी कि मेरा होने वाला हस्बैंड या बॉयफ्रेंड शाहरुख खान जैसा. ये वही वाली हाल है. अनुज जी का कमेंट्स आर लाइक टॉप नॉच. क्या करेंगे अनुज जी? वो देखते देखते वो भी हीरोगिरी सोच रहा था कि कर ले घर में. इट बैकफायर्ड. जितेंद्र का हो गया. कितना बार करेंगे? 1 सेकंड. हाँ. So as you can see, KRKG is doing whatever it takes to stay in the limelight. उनका जुर्म है करोड़ों की फिल्मों को कौड़ियों के भाव फ्लॉप करवा दिया. Okay, but KRKG का भी कुछ, I don't know, I don't understand what he's trying to do, but there's a lot of support for him, as you can see. Killed innocent people on footpath, killed innocent animal. Many talented actors have ended their career because of him roaming free. And he was jailed because of one old tweet. So if you are following KRK on Twitter, you can see that he's probably going to spill the beans soon about who jailed him or anything. I don't know if he can do that because it's going to be Khatron se khelna, but I just want to show you. I didn't review film Brahmastra, still people didn't go to the theaters to watch it. So it has become a disaster. Hope Karan Johar won't blame me for the failure like any other Bollywood people. Like many other Bollywood people. So, but he is also going to join a political party and he was tagging some RSS people yesterday. And yeah, so Karan Johar KRK ka bhi bharosa nahi hai. Wo, is he doing all this nautanki or we don't know what it is, but yeah, exactly. HPT, there's a lot of propaganda, unfortunately, and आर्ट वाले में उसने सारे बड़े लोगों का नाम ले लिया. ये सब नहीं है मेरे इसमें. Exactly. There was another one. Yeah, last week we saw that, right? Where he is saying that सारे बड़े लोगों का नाम है उसमें. Yeah. So
this was the first one of its kinds, and then last week पूरा ये सब कुछ ये he was saying. So he says कि Karan, SRK, Amir, Ajay, Akshay are not involved in my arrest. So don't know what he's trying to do. It was very nice movie. We very appreciated. We So ये भाई साहब को ब्रह्मास्त्र मूवी लगाने के रिव्यू करने के लिए अच्छी तरह से करण जौहर might have given him money because ये इंग्लिश बोलता है भाई साहब. मैं जैसे हिंदी बोलती हूँ वो वैसे इंग्लिश बोलता है. तो as you can observe यहाँ पे देखते हैं. It was the best review that is not going to work in their favor because इंग्लिश इतनी घटिया है बेचारे अंकल का. It was very nice movie. We very appreciated. We very appreciate Mrs. Alia Bhatt and Ranbir Kapoor. जी okay. And overall movie was very entertaining and we very happy. मजा आया. पैसा वसूल हुआ? जी बिल्कुल. का हुआ? हाँ हुआ. VFX कैसा था पिक्चर का? अच्छा लगा पिक्चर. बहुत. मैम शक्ल भी तो देखिए ना, झूठ बोल रहा है, पकड़ा गया. ही इज लाइंग थ्रू हिज टीथ एंड दैट्स विजिबल. उसका पूरा पर्सनालिटी दिख रहा है कि उसको कैमरे में आके ही वो इतना खुश है. థ్యాంక్స్ అండి శ్రీనివాస్ గారు, ఎలా ఉన్నారు? చాలా రోజులు అయింది. థ్యాంక్ యూ. तो आपके पास ब्रह्मास्त्र का सो सॉरी. सो यहाँ पे एक बहुत ही नंदी अस्त्र जी और ये हीरो जी बात कर रहे हैं और इतना बढ़िया एडिटिंग है. ये भाई साहब किसी ने कौन किया मालूम नहीं है, दीदी या दादा, आई डोंट नो हु इट इज, बट सो बिग बीफ गाय का सीडी दिखा रहे हूँ. सो आई एम अ वेरी बिग बीफ गाय, आई एम फ्रॉम पेशावर करके दिखा रहा है वो. ओके, Big beef. Big beef guy. I'm a big beef. शिवा प्रीति सॉरी. This editing is awesome. I mean, it actually fits. ये मैंने कहा ये कौन सा बॉक्स है? ये कौन सा बॉक्स? सॉरी. मैंने दो यार, तुम ना A to Z मुझे सब बुलवाती हो और फिर मैं पूरी बन जाती हूँ अपने. नहीं, आई एम सॉरी. ये कौन सा बॉक्स है? ओके, సారీ, ఐ థింక్ యువర్ గెటింగ్ కట్ ఆర్ మై ఇంటర్నెట్ ప్రాబబ్ली. सर मैं తప్పకుండా జాయిన్ అవ్వచ్చండి. థ్యాంక్ యూ. देखिए सलमान भोजपुरी मूवी करेगा, साउथ वाले बॉयकॉट कर देंगे. आई कैन टोटली इमेजिन हिम. भोजपुरी में तो लेंगे नहीं. आई कैन लाइक भोजपुरी पीपल आर स्टिल, आई मीन दे आर वेरी फैसिनेटेड बाय मिथुन चक्रवर्ती. No, I'm not kidding, ma'am. Seriously. ओके, सो या देन तो मतलब कहाँ जाएगा वो बेचारा? श्रीलंकन मूवी या कहीं पाकिस्तान मूवी में जाना पड़ेगा उसको ना. तो यहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर है जो एक बार सुन लीजिए जोक, इट्स अमेजिंग. दिन में हमारा आना जाना कम से कम 15-20 बार आना जाना रहता है. कभी टोल नहीं मांगता. तुमसे टोल नहीं लेता? कभी भी टोल नहीं लगता तुम्हारा? कभी नहीं लिया हमसे. क्या लेता ही नहीं. 15-20 बार निकलते रहते हैं. अच्छा गजब यार, तुम क्या धौंस देते हो? कहाँ नहीं लेता टोल? धौंस नहीं हो गया, नहीं लेता. बोलता है भैया किनारे से निकल जाओ आराम से. अरे गजब यार, जलवे वाले आदमी भाई. साइकिल लिए रहते हैं ना, तो किनारे से निकाल देता है. इट्स दिन में हमारा आना जाना कम से कम 15-20 बार आना जाना रहता है. कभी टोल नहीं मांगता. तुमसे टोल नहीं लेता? कभी भी टोल नहीं लगता तुम्हारा? कभी नहीं लिया हमसे. क्या लेता ही नहीं. 15-20 बार निकलते रहते हैं. अच्छा गजब यार, तुम क्या धौंस देते हो? कहाँ नहीं लेता टोल? धौंस नहीं हो गया, नहीं लेता. बोलता है भैया किनारे से निकल जाओ आराम से. अरे गजब यार, जलवे वाले आदमी भाई. साइकिल लिए रहते हैं ना, तो किनारे से निकाल देता है. आई थिंक हिज सिंसियरिटी इज जस्ट अमेजिंग. इतना अच्छा से बोलता है. रॉकी जी सॉरी, यू आर सेइंग समथिंग.
Yes, ma'am. Actually, I see a lot of public servants going. I mean, they're going online with their channel content. So I don't know if it's good or bad. I'm just a little skeptical whether these public servants should go online like entertainers. So obviously, this video is shot in a planned way. It's not like it's Yeah. not a random video where somebody was talking and video was shot. So actually, I know this cop. This cop, I mean, is into habit of shooting a lot of videos for entertainment Oh. purpose. Oh wow. Okay. Okay, so and one time it like once it happened like us, we get that scam calls, right? That you have won a lot in India. It's Uh-huh. a Nigerian scam or something. You may have Uh-huh. heard about it. That's you have won a lottery of 1 million pound, and you just need to deposit 10,000 rupees, and all that Yeah. amount will Claim it. be into the account. So there was scam caller, and this guy, instead of catching that person, he was into like an entertainment thing. So he shot that entire video discussing and talking and going about. So he became a content creator basically. Oh, acha. Okay. So Okay. Interesting. आई एग्री Oh. विद यू रॉकी जी, जिसका जो काम है वो उस पे उसको फोकस रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि कल को डॉक्टर सुई लगाते लगाते भी वीडियो बना रही है, ऑपरेशन फायर थिएटर में फाइटर अंदर जाके पानी बहा के वो कटरीना को चला रहा है। मतलब और जहाँ काम है वहाँ मैंने ऐसा एक इंस्टा पे रील देखी थी मैंने, Yeah. आर्मी पर्सन की देखी थी। He was doing that too. He was doing a dance. कहाँ पे उसकी पोस्टिंग थी and he was dancing there. It's like, are you serious? Yeah. I mean, imagine सबको सोशल मीडिया पे आने का है अब। Imagine, ma'am, Rasna, ma'am, a doctor in an operation theater is saying, no, take my video from that angle. I need to cut this muscle again. So Oh take my my gosh. video I from know. that angle. भरोसा नहीं सोशल है. मीडिया का क्रेज रियली बहुत ज्यादा हो रहा है अब। कुछ प्रोफेशंस में इंस्टा पे रील दिखती है, इट्स नॉट हेल्दी फॉर अस। Yeah, And that is true. policemen are supposed to look scary, not in an entertainment, so that the criminals actually get scared. Even I mean, the normal people should not, but content like this is watched by everyone, right? So Hey, that is just an making me opinion, think ma'am. कि I'm not making up मेरे को any लग रहा judgment. है कि when you're saying all these things मेरे को लग रहा है कि maybe because we are idolizing them as the real heroes now, maybe they are trying to drum up their own popularity or something, like by doing all this. I don't know, maybe when you say that I'm thinking about it now that we are like saying And कि movie shit is going on in their heads also, ma'am. They're also humans, right? Rachna ji, And it's not about entertainment. They are not our hero. It's not like that. It's something कि जो आपका जॉब है आप उस पे ध्यान दो। आप gracefully, उसके right? साथ में मजाक करो, बंदे के साथ में जो करना है करो, बट यू डोंट नीड टू बी सोशल मीडिया पे। Right, absolutely. ये गलत है क्योंकि आपका वो डिपार्टमेंट नहीं है। एवरीथिंग शुड नॉट बी एंटरटेनमेंट। ऐसे तो कल को टीचर डॉक्टर सब आने लगेंगे, ऐसे फायर फाइटर आ रहा है, झाड़ू लगाने वाला आ रहा है, तो फिर अब सब सोशल मीडिया पे ये दिस इज नॉट फनी। I know that is true. That is true. No, that's a good point actually. Content was good, but getting it shot by a policeman in uniform, I think, is what we should see. No, the problem is that there is there's the problem is यहाँ पे two people have been disciplined like that. A guy like a police officer who had a TikTok extremely viral videos, and also a lady who was a police officer, active duty police officer, who was doing all these dances and all those things. Right. Yeah, who was like suspended from duty and all that. तो पता नहीं मतलब ये And ma'am, I'll draw your attention toward this third class media that we have in our country nowadays. Any policeman doing normally his duty, look at how this Singham has come, and she's Lady Singham, and this is Dabang, and that person is so and so. All movie references they give all the time. Exactly. And they fall for it. I think the policemen just fall for it. हाँ, रॉकी जी, ये इन्हीं सब का बदौलत ये सब दबंग बने। यही सब सिंघम से लेके दबंग की जो ये नौटंकियां है ना, ये सब इन्हीं की फॉलोइंग्स है। Ma'am, there was a police officer in Bihar. He was Shivdeep Lande, and he was very honest, upright officer. So once I saw his interview, I was very impressed by him. So I saw his interview, and I'm not like, I don't know about details of that officer after he left Bihar cadre, but he was giving an interview, and I was very impressed by him when he said, the reporter actually asked him कि जो आसपास के लोग हैं, they call you Singham, so how do you feel?
So that police officer, he was an IPS. So he told like that, don't call me Singham and Dabang like all that. These are cinema heroes. We have our own profession. So I don't like these labels that you media guys put us on. Put on us. So that's what I mean. I really like that comment, but I mean, I don't know how many officers are like that. But that was a good comment. I liked it. Hey, that's good. Okay, at least he has a self-awareness. He is a human being first, and he wants to be praised for whatever he has done or whatever if it is, but not like compared to all those. Yeah. And everybody has to be realistic, ma'am. Especially the profession like police or firefighters, Preeti rightly said, or doctors. These are serious professions. There's no scope of entertainment or background music going on, and you becoming a TikTok star. So if you want to be on TikTok, become TikTok for something else, and without uniform, obviously. I also saw this HPT where he was inviting him for that Gujarat when Varun had his show where he was showing this video, right? Ajay Devgan ka they were doing felicitation or something like that for doing an ad in the Gujarat thing, and then the IAS officer who was presenting all these things was actually saying that he's so inspirational and all that, Ajay Devgan, and I was like, it's just so frustrating to see all that kind of shit. रचना बट पता है इसमें एक बात कहूँ मैं कि गंगाजल मूवी वाज स्टिल वेरी डिफरेंट. आई डोंट सपोर्ट अजय देवगन, बट उसमें ना ये सब फालतूगिरी नहीं थी कि वो नाच रहे हैं, खड़े हो रहे हैं और बीवी के गले में हाथ डालें या वहां पे किसी ने दीवार फोड़ दी. एटलीस्ट दैट काइंड ऑफ मूवी नहीं थी वो. इट वाज अ वेरी सीरियस टॉपिक एंड इट मूवी वाज डिलीवर्ड लाइक दैट. तो अगर आप इंस्पायर होते हो तो समझ में आता है कि लॉयल्टी क्या होती है, अपने काम क्या होता है, तो ऐसी मूवीज समझ में आती है. बट ये दंगल और ये सिंघम और ये च्युइंगम टाइप की जो मूवीज है ना, सूर्यवंशी, दीज आर नॉट पुलिस ऑफिसर्स. तो ये डिसरिस्पेक्ट है. I haven't watched Gangajal, but I am not sure. But if you think that it's like good content, but that's good. But see, the problem is, abhi to we are not able to see these faces, right? So unfortunately, I don't know when they will get good content. I'm always support to the content. I'm not talking about the yeah. Ma'am, that's based on a true story in Bihar actually. There's a place called Bhagalpur in Bihar. So a tragic incident happened. Like lot of criminals were locked up, and somebody had, thrown acid on them, and they were made completely blind. So it's kind of a mix when you get a mixed feeling that criminals deserve a punishment, but should it be that harsh? So that's the movie. When the movie ends, it leaves you with that question actually. Interesting. The main game is to the impact on mind. अगर वो मूवी किसी के माइंड पे ये इम्पैक्ट कर सकती है कि मैं आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, दैट्स अ वेरी गुड मूवी देन. बट अगर किसी का इम्पैक्ट ये आ रहा है कि मैं कल इंस्टा पे रील बनाऊंगा कि क्या बे साले कहाँ चल रहे थे, oh come on, then this is really not good. That is so true. Right, at the end, ma'am, that movie, the Ajay Devgan is the SP, Superintendent of Police. He's an IPS officer, so he actually appeals to the people that mob lynching in any form is very bad. So that movie ends with a good message, and he pursues the mob that let the law takes its course, and I'll personally make sure that this case ends a logical conclusion. But as Preeti said, that has a good content. So yeah. Okay. So Pranav Kumarji, actually you're right ki see the problem is we are lacking perception yahan pe. That is the problem here, and kitne sare log, they lost their jobs, they lost their livelihood, they lost like literally food nahi tha, health nahi tha, kinke parents were dead, like children were dead, like so many things, and then but media is still interested in Taimur ne khana khaya, कब हगा, कब सोया, कब रोया, मतलब just feeling so sad. इवन वो जो वाइफ वाला जो नेटफ्लिक्स पे ये आया ना, 4 महारानियों का शो, बॉलीवुड, उसमें वो संजय कपूर की बीवी कह रही है, oh my god, as soon as I heard that lockdown is going to start, the first thing I did is I'll make sure I have enough wine for months. Oh my god, are you serious? I just filled my things with wines because I want wine every day. Are you serious? Yes, ma'am.
No, wine is Rachna ma'am. Wine is बच्चों वाला drink ना. Now नहीं छोरियां but रॉकी जी the message I'm saying is like people were looking for कि हम घर कैसे पहुंचे, लोगों के पास खाना नहीं था लोगों का, but the life other side is filling the wine and Neelam was saying oh my god I'm so tired क्योंकि मुझे 2 टाइम खाना बनाना पड़ रहा है, so irritating. Right. So, that actually line was from Bevde log, that was like who are drunkards actually. But छोरियां छोरों से कम है के? आजकल women also want hard drink. Like, No, I'm okay with the people want drinks. scotch. I'm talking about the thoughts. People Right. are looking, suffering for so many problems, and here Modi. is the life where people are thinking about wine, relaxation, and So- ये हमारे role models हैं. One second, I think Rajput Vikram, I can't see the full name here. Hello sir, how are you? Welcome. Hi, ma'am. Hello. Yeah. Hello. Yeah, hello, we can hear you. Hello. हेलो, आवाज आ रही है? Yes, आ रही है sir. Yeah. मैम ये जितने सुशांत सिंह राजपूत पे हैं वो कैंपेन चल रहे हैं। So आपका SSR का फोटो था सर, so इसलिए ले लिया आपको. So बोलिए, what is your opinion on what's happening? मैं ऐसा का वो क्या फोटो लगाने से कुछ होगा? अगर पॉलिटिक्स वाले ही दिखे तो क्या कर सकते हैं? पहली बात तो कोई पॉलिटिक्स वाले इंसाफ नहीं दिलाएंगे, सिर्फ अपने वो क्या बोला जाता है अपनी सरकार बनाने के लिए सिर्फ वो सीबीआई दे चुके हैं। बिहार में सरकार गिर गया, अब इनसे कोई मतलब नहीं है क्योंकि बिहार में सरकार इनका गिर चुका है। अब ये सुशांत सिंह राजपूत पे कोई भी एक्शन नहीं लेने वाले हैं, कोई भी सुशांत सिंह राजपूत केस इनसे कोई मतलब नहीं क्योंकि इनको उनपे कोई ध्यान ही नहीं है। तो और रही बात महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में इनकी सरकार फिर से टूट जाएगी, मेरा वादा है, आप देख लीजिएगा फिर से, क्योंकि जब तक इनको सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ नहीं दिलाएंगे, ना तो बिहार में ना महाराष्ट्र में और कहीं भी, और रही बात दिल्ली में और कहीं भी, अगर ऐसे साइलेंस वहीं भी होगी तो बीजेपी को वोट नहीं देगी, क्योंकि अगर बीजेपी अच्छी रहती, माना कि कांग्रेस अच्छी नहीं है तो बीजेपी भी अच्छी नहीं है। अगर बीजेपी अच्छी रहती तो अमित शाह ने सीबीआई को दिया, आज तक अपडेट क्यों नहीं पूछा? पॉइंट नंबर 1। और रही बात इलेक्शन के टाइम ही सीबीआई को क्यों दिए? इलेक्शन के बाद देते या फिर अपडेट पूछते हैं, आज तक अपडेट भी नहीं पूछे। अगर ट्विटर तो ये नरेंद्र मोदी हमेशा चलाते हैं, ट्रेंडिंग में भी सुशांत सिंह राजपूत 5 नंबर 6 नंबर पे हर दिन मैं देखता हूँ नंबर 5 नंबर 6 पे आते हैं। क्या नरेंद्र मोदी जी को ये नहीं दिखता है कि अगर वो ट्रेंडिंग में इतना लोग ट्रेंडिंग में 5 नंबर 6 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पे आ रहे हैं, ऐसे साइलेंस में ऐसा रिट्वीट ऐसा चला रहे हैं, तो उनको ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर पब्लिक उनके साथ है तो बीजेपी क्यों नहीं आवाज उठा रही है? अगर सीबीआई नहीं देना रहता तो झूठ मूठ का सरकार बनाने के लिए ऐसा क्यों किए? अमित शाह भी कुछ नहीं बोल रहे हैं ना कुछ, क्योंकि इनमें बड़े बड़े लोग का हाथ है। अगर ऐसा बोल दिए तो उनके पास उनका वो बॉलीवुड के बड़े बड़े लोगों का हाथ है, इसलिए बीजेपी चुप है और कुछ नहीं है। मुझे नहीं लगता कभी भी इंसाफ मिलेगा, मेरा लिख लीजिए, कभी भी इंसाफ तो नहीं मिलेगा, क्योंकि इंसाफ अगर मिलेगा भी तो जनता चाहेगी बाइकआउट करेगी, वही इंसाफ रहेगा। क्योंकि वो ये पॉलिटिक्स वाले कभी भी इंसाफ नहीं दिला पाएंगे, आप लिख के ले लीजिए, क्योंकि इसमें बड़े बड़े लोगों का हाथ है, कुछ नहीं हो पाएगा। Yes, Rachna ma'am, go ahead. नहीं, please you go ahead sir. रॉकी जी. यस मैम, सो आप ये हमारे साथ हमारे भाई जो जुड़े हैं, तो मैं आपसे सर ये कहना चाहूँगा कि ये जो आप बात कह रहे हैं ना, ये सब हमारे सबके मन में ये चल रही है ये बात जो आप कह रहे हैं ना, इसीलिए हम लोग लाइव जुड़ के, रचना मैम भी लाइव आकर वी आर लीडिंग, ये हम मूवमेंट आगे लेके जा रहे हैं और लोगों में ये जागरूकता भी फैला रहे हैं कि बॉलीवुड की गंद कहाँ कहाँ तक है। आप देखिए, एक बार देखिए, बॉलीवुड पे कोई हाथ इसलिए नहीं डालना चाहता है क्योंकि बहुत पैसा है उनके पास और लोगों का सपोर्ट है। ये घर के बाहर निकलते हैं, गधे किस्म के लोग बाहर हुजूम जमा करके
वो उधर से ऊपर से हाथ हिलाते हैं, नीचे से गधे सब हाथ हिलाते रहते हैं कि पता नहीं ऐसा 2 सिंग वाला इंसान देख लिया या किसी आसमान से उतरा कोई एलियन देख लिया, ऐसे ही वो रिएक्ट करते हैं अपने स्टार को देख के। एक बार स्टारडम खत्म होती जाएगी ना, ये आप देखिए पैटर्न है। मैं आपको सकारात्मक डोज दे रहा हूँ बात का कि एक बार जब पॉलिटिशियन का भी पावर खत्म हो जाता है ना, तो उसको भी बुरे दिन देखने पड़ते हैं। अपने पापों का कर्म, जो पाप कर्म किए हैं उन्होंने, उस कर्म का फल भुगतना पड़ता है। लालू यादव जब वो पावर में थे, कोई सोच नहीं सकता था कि उनका कोई बाल बांका कर पाएगा, लेकिन वो जेल में है। तो आप समझिए कि समय बहुत बलवान होता है, और सकारात्मक सोच के साथ चलिए, अपने आसपास लोगों को जोड़िए, उनमें भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार करवाइए कि हमारे को आगे बढ़ के लड़ना है। आपकी जितनी भी उम्र है, जरा थोड़ा पीछे जाके देखिए, इस देश में चमत्कार हो चुके हैं। जब इमरजेंसी लगी थी, सब यही बोलते थे कि इमरजेंसी कभी नहीं जाएगी, लेकिन इमरजेंसी गई और इंदिरा गांधी जी हारी। अर्ली 40s में कोई नहीं बोलता था कि अंग्रेज कभी यहाँ से जाएंगे। अंग्रेज 47 में जान बचा के भागे। तो चमत्कार होते हैं, आपको अपनी हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी। बैठे बिठाए कुछ मिलता है कभी? So Rajput ji, see, I agree with what Rocky ji is saying, sir. अगर आपको भी होप नहीं होता तो आप यहाँ पे आते नहीं थे और अपने बात नहीं रखते थे। तो प्लीज हमको तो होप रखना ही चाहिए, बिकॉज देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव देन कीपिंग होप। तो प्लीज आप समटाइम्स एज रॉकी जी सेड, मेरे को भी लगता है कि यार 2 साल हो गया है। मेरे फ्रेंड्स हंसते रहते हैं कि क्या है तुम फिर से वही कर रही हो, कुछ नहीं होगा, क्या होगा, everybody is going back to what they're doing and all that. So but we cannot think कि कुछ नहीं होगा, right? So don't just we have to stay together and continue doing what we are doing. We cannot I totally agree with Rachna too, क्योंकि बहुत सालों तक जो दूसरी पार्टी ने राज किया है, there are lot many wrong things happened, और इस वक्त जो दूसरे पर्सन जो इस वक्त 2-3 सालों में आया है, उसके ऊपर बहुत कुछ है बदलने के लिए। प्लस बैलेंसिंग द सेफ्टी ऑफ द कंट्री एंड द आउटसाइड कंट्री जो हमारी इमेज थी। तो देयर आर लॉट मेनी थिंग्स इन हैंड। तो हमें जो हमारा जो पावर है, हमें वो करते रहना है। उनके पास में उससे प्रायोरिटी, बॉलीवुड से भी प्रायोरिटी कुछ ऊपर। मैम, मैं एक पॉइंट रेज करना चाहूंगी। देखो, आप लोग बहुत जल्दी हार मान जाते हो। मैं जो अभी एक कोई बोल रहे थे ना पॉलिटिशियन के बारे में, मैं कहना चाहती हूँ कि क्या होता है ना, कोई भी चीज को टाइम लगता है। आप अभी तक गुलशन कुमार का अभी तक केस सॉल्व नहीं हो पाया, अभी तक। आप देखोगे इंसान, पता है लोग, यदि आप देखो, कोई भी मुस्लिम कम्युनिटी को आज तक कोई छेड़ नहीं पाया था, लेकिन साथ देना टाइम लगता है। आज वो सब मुद्दे, आप बताओ, वोट का भी मुद्दा चालू हो गया, क्यों? लोगों की जमीन हड़पी जा रही है। तो थोड़ा टाइम दो, थोड़ा। इतनी जल्दी हार मान जाते ना, ये गलत है। किसी से भी भरोसा उठा, पहले बताओ कि जब तक आप एकजुट नहीं रहोगे, एक सरकार को एक बहुमत से नहीं जिताओगे। आप लोग बॉलीवुड का क्या हाल किया देखो। पहले ये लोग मोदी को सब विरोधी थे ना, आज उसके आजू बाजू खड़े रहने के लिए क्यों भग रहे हैं? क्योंकि उनको पता है ये हमारा खेल बिगाड़ सकते हैं। क्यों आ रहे हैं? पहले तो यही आमिर खान था ना, जो बुराई करता रहता था कि मोदी की वजह से सारे लोग मर रहे हैं। और ये जो गंगा का पानी वाला जो था, उसमें भी ये खड़ा हुआ था। बॉलीवुड के जितने भी थे, अभी भी विरोधी टाइप के लोग हैं। वो लोग कभी सब, अब क्यों जा रहे हैं ये लोग? आप लोग सोचो, आपकी पावर क्या है? इनका राजपूत जी, या प्लीज अब बोलिए कुछ। अच्छा, एक बात बताओ, बीजेपी पे इतना भरोसा कर रहे हैं, तो बीजेपी वाले जब बिहार, एक एग्जांपल देता हूँ, बिहार में जब इनकी सरकार थी, नीतीश कुमार के साथ इनका गठबंधन था, तो ये कुछ भी सीबीआई ईडी को नहीं दिए। जैसे इनका सरकार खत्म हुआ, ईडी सीबीआई लगा दिए। क्यों? क्योंकि जनता इनके बारे में समझे कि ये ऐसा बिहार में ऐसा चल रहा है। ये जब उनके साथ गठबंधन था, तब सीबीआई क्यों नहीं दिए? जब सरकार टूटने के बाद ही गठबंधन क्यों दिए? क्या रीजन है? बीजेपी वाले, अगर कांग्रेस अच्छी नहीं है तो बीजेपी भी अच्छी नहीं है, पहली बात।
बीजेपी पे देखो भरोसा करना बंद रियलिटी कर में दो। एक चीज बताऊं, क्योंकि आपको ग्राउंड रिपोर्ट नहीं पता है। हमारे इधर के जो लोग हैं सर, मैं बीजेपी की सपोर्टर नहीं हूँ, पहली बात। Yeah, मैं ये exactly. So बताती same हूँ, here with हमारे इधर जो गरीब anybody. लोग हैं ना See, सर, उनको 2-2 2.5 लाख रुपए का घर दिया गया है, पता है, राशन फ्री में खा रहे हैं वो लोग, जिनको कभी जिनने झोपड़ी से बाहर निकल के नहीं देखा था सर। आप ऐसा सोचते हो ना, तो आप जो लोग आज, पता है, हमारे इधर मतलब लाखों के घर बने हैं सर, लाखों में घर बने। मैं देखती हूँ उन लोगों को, कितना खुश होते हैं वो लोग कि हमको छोटे, हम सोच भी नहीं सकते थे, बोले कि हम कभी स्लिप वाले घर में रहेंगे। आप सोचो, रियलिटी ये नहीं है। आप एक केस को आप सुशांत सिंह को लेकर आप ये सोचते कि ईडी और सीबीआई, पहले देखो, पहले इंसान को पावर चाहिए होती है, उनको लगता है कि जनता का उनके साथ सपोर्ट है ना, तो सीबी और ईडीआई सब जगह जाती है। यदि उनको पता होगी तुम्हारा सपोर्ट नहीं है, तो वो कभी सीबीआई को कभी भी नहीं पहुंचाएगी कहीं। Main point is सीबीआई केंद्र के अंदर में आता है। और केंद्र कौन है? नरेंद्र तो मोदी। सर सीबीआई देखो, किसने दिया? जनता को, अमित उनको शाह। पता है कि अमित शाह जनता आज का तक उनके 2 पास सालों सपोर्ट में, है। सुनिए, अमित शाह आज तक 2 सालों में सीबीआई से अपडेट क्यों नहीं मांगे? क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत केस में अमित शाह ही ने ही सीबीआई को दिया था। तो सीबीआई का अमित शाह को कर्तव्य बनता है ना सीबीआई से पूछना केस का अपडेट कहाँ तक पूछा, 2 सालों में क्यों नहीं पूछे? क्योंकि इनमें बड़े बड़े लोग का हाथ है। अगर बड़े बड़े लोग चले जाते हैं, इनको टैक्स कहाँ से मिलेगा? टैक्स कौन भरते हैं? बॉलीवुड के बड़े बड़े लोग, क्योंकि बड़े बड़े लोगों का हाथ है। और सर आदित्य देखो, बड़ी ठाकरे बड़ी का हाथ है, मछलियां सीधा बोलता हूँ, पकड़ने के आदित्य लिए ठाकरे का इतना हाथ है। जल्दबाजी, देखो सर, आदित्य बड़ी ठाकरे बड़ी का बड़े हाथ बड़े है। लोगों को इतनी जल्दी तो आदित्य नहीं कौन पकड़ा है? जा सकता। आदित्य ठाकरे कौन है? उद्धव ठाकरे के लड़के। आपने देखा कभी पालघर के भी साधुओं के साथ क्या किया गया? आपने नहीं, इंसाफ मिला? इंसाफ मिला? इंसाफ विक्रम मिला? नहीं जी, मिला। 1 second, तो विक्रम जी, 1 अभी second, 1 आप second. देखो ना, केस खुल रहा है उनका, केस खुल I'll रहा tell है you, उनका। नहीं ज्योति जी, 1 second. टाइम आउट, Jyoti टाइम ji, आउट। 1 second, 1 second. I just want to say something to Vikram ji. See, Vikram Rajput ji, I'll tell you something. आप देखिए यहाँ पे हम लोग 20 साल में कितना आगे निकल चुके हैं। आप शायद 23, how old are you? 23, 20, 25? मैम, उस ऐसा सक्सेस क्या क्या मतलब क्या करना है जो एक second. मतलब वो नहीं, I just want to tell you, आपका जो अवेयरनेस लेवल है सर, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ब्लाइंडली अंधभक्त की तरह नहीं है। आप यू आर आस्किंग क्वेश्चंस एंड आप पूछ रहे हैं एंड आप फ्रस्ट्रेटेड हो, आप यू नो पीछे नहीं हट रहे हैं, आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। दिस इज ऑलरेडी, हमने जीत लिया कुछ। यू नो डेमोक्रेसी में आपका जो रोल है, यू आर यूजिंग इट एंड यू आर यूजिंग इट फुल्ली। So don't see, all you have to do is just keep hope and keep fighting and keep raising your voice like this. आप frustrated मत हो। See, हमारा भी we are also frustrated कि 2 साल से कितना करेंगे, कितना करप्ट है क्या ये पब्लिक के एंचूना लगा रहे हैं क्या हमको करके। we are always like frustrated. But आपने see, when I was your age, I was completely सलमान खान का मूवी 40 बार देखो एंड खत्म करो, बस घर जाओ। But you are doing something different and that is very very good for the country. तो आप जस्ट लगे रहो। आप That's अभी what I देखो, can... सुनो, एक चीज मैं आपको कहना चाहती हूँ। अभी अपन बायकॉट कर रहे हैं मूवियों का, तो कहाँ ब्लेम जा रहा है कि बीजेपी के लोग करवा रहे हैं, कहाँ ब्लेम जा रहा है? बजरंग दल करवा रहा है। ये ब्लेम नहीं जा रहा है कि सुशांत सिंह के लोग करवा रहे हैं जो उनको फॉलो करते थे, या जनता करा रही, नहीं, ये बॉयकॉट इनकी गैंग करा रही। आप सोचो, आप ये चीज भी सोचो। नहीं रचना मैम, आई कम्प्लीटली अग्री विथ यू। ये जो हमारे भाई जुड़े हैं, ये आपकी जितनी भी उम्र है भाई, 22-23 साल, 24 साल, इस उम्र में पहले लोग जो जैसा आप सोच पा रहे हैं ना, एक जागरूक नागरिक के तौर पर जो कुछ आप बात कह रहे हैं, इससे ये साबित ही होता है कि जनता में जागृति का अलग ही स्तर पहुंच गया है। ये धीरे धीरे जो है ये स्तर बढ़ता जाएगा और ये बॉयकॉट से बहुत बड़ी चोट पहुंची है उस माफिया को जो कि हमारे समाज को धीरे धीरे सड़ाता जा रहा है। ये पहला कदम है। धीरे धीरे कोई काम होता है। वो कहावत भी है ना कि धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आवे फल होए। तो आप इस मतलब जो कहते हैं सब्र है ना, इससे
डटे रहना है। आप जो भी हमारे योद्धा हैं, जो भी हमारे शास्त्र हैं, वो यही कहते हैं कि आप अपने काम में लगे रहिए, फल की चिंता छोड़कर निरंतर जो काम आप कर रहे हैं अच्छे मन से, कल हो सकता है रिजल्ट नहीं आए, परसों आ जाएगा, तरसों आ जाएगा। आपका जो प्रयत्न है उसमें कहीं कमी नहीं रहनी चाहिए, वो असल बात है। ये सत्यनारायण। और आपको मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो सॉरी, बट मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि देखो, मैं भी ये सपोर्ट करती हूँ ना, इस चीज के लिए मैं भी खड़ी हूँ ना, बट मैं ये सोच के नहीं हार जाऊंगी कि अभी यार ये नहीं हुआ है तो यार मतलब ऐसा। भरोसा एक दिन होगा, अपने आप पे भरोसा रखो ना। हम कर रहे हैं ना, एक दिन जरूर होगा। हम किसी को 2 साल ब्लेम से नहीं कर कर रहे सकते हैं। क्योंकि हमने इन लोगों को 2 साल सपोर्ट से करके आगे बढ़ाया नहीं है। नहीं आप नहीं ये नहीं भी तो बाबू सोचो। होगा या नहीं सी वी हैव 2 साल से वी डिड नॉट सी वो जस्टिस का वो नहीं हुआ है, बट कितना कुछ वो गैप इन द गेम बोलते हैं साइकोलॉजी में, हमने कितना कुछ कर दिया है 2 साल में। आप देखिए ना वो लुक एट जस्ट इवन इफ यू लुक एट आवर चैनल वीडियोस यू विल जस्ट सी द काइंड ऑफ अवेयरनेस दैट वी हैव आवरसेल्व्स लर्नड सो मेनी थिंग्स। इट्स लाइक कॉलेज में भी जाके इतना एजुकेशन नहीं मिलेगा हमको जितना हम लोग पढ़ लिए हैं एंड समझ लिए हैं सोसाइटी के बारे में एंड ये सेलिब्रिटी कल्चर के बारे में। And Rachna, what we are doing from last 2-3 years, it's think about it कि when you know a lot of channels Modi ji का team follow करता होगा, and think about it how important it is for him also to show support like this. See Vikram ji, I'll tell you, Vikram ji, big support for him. Yeah, no, वो डायरेक्टली नहीं कर सकते, हम इनडायरेक्टली कर रहे हैं उनके लिए। तो थिंक अबाउट इट कि हम उनको कितना सपोर्ट दे रहे हैं अपने पावर दिखा के। एंड नॉट जस्ट बिकॉज़ ही इज इन बीजेपी। या बोलिए। पहली बात, अगर बॉलीवुड का मूवी बाइकआउट हो रहा है तो जनता की वजह से हो रहा है। मोदी जी को क्रेडिट मत दीजिए। मोदी जी बीजेपी, अगर कांग्रेस अच्छी नहीं है तो बीजेपी भी अच्छी नहीं है। पहली बात को गलत समझा है, आपने मेरी बात को गलत समझा है। मतलब कि उनको मेरा इंटेंशन, मैंने मोदी को कहाँ क्रेडिट दिया यार? मतलब आपने मुझे मोदी सपोर्टर समझ लिया है क्या? बात ये है कि आपका एज अ नागरिक क्या कंट्रीब्यूशन है कंट्री के लिए, वो आप कर रहे हैं, वो हेल्प मिल रही है उनको। आपका घर में बैठना और जहाँ मोदी जी बताएंगे झाड़ू लगा लो वहीं झाड़ू लगाओगे, कोई रोबोट। सुनिए, पहले जनता क्या बोल रही थी? अगर मुंबई महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बने तो इंसाफ मिलेगा। बीजेपी की सरकार बन गया, उद्धव ठाकरे की सरकार खत्म हो गई, इंसाफ मिल रहा है क्या? इंसाफ मिला नहीं मिला? आप ही के लिए तो बैठे थे कि आपका बस फरमान आएगा और हम तुरंत चालू हो जाएंगे, उनके पास और कुछ काम धंधा तो है नहीं। नहीं विक्रम जी, सी आई टेल यू समथिंग, वो जो आपने जो बोला ना कि मोदी जी को क्रेडिट तो बिल्कुल मैं भी नहीं दूंगी, बिकॉज मैं आई एम डूइंग व्हाट एवर आई कैन, राइट? तो आप भी कर रहे हो ऐसे आवाज उठा के कि यू नो आपको जो जस्टिस चाहिए, सो वी आर ऑल डूइंग इन आवर कैपेसिटी। अभी वो प्रधानमंत्री है तो इसलिए उनको सपोर्ट करना है हमको, बस इट्स नॉट बिकॉज ही इज बीजेपी और एनीथिंग। सो प्लीज आप सोचिए ना दोस्त, ये इंस्टा वीडियो देखो नहीं है और ये भाई मैं इसलिए सपोर्ट करती हूँ क्योंकि उनने जो काम किया है, मुझे वो चीज नहीं है जो उनने नॉर्मल जनता के लिए काम किया है ना, वो देख रही हूँ मैं। ये नहीं कि मतलब ये नहीं किया तो इसके लिए मैं वो कर दूंगी। जो छोटे छोटे जनता ने कभी अपने लिए सुख नहीं देखा है ना सर, वो चीज मैं देखती हूँ ना तो मुझे उस चीज की खुशी होती है। सबका अपना गौरव सम्मान वापस मिला है, लोग उस चीज के लिए उनको सपोर्ट करते हैं, ना कि ये कि मतलब हम कोई और लेवल उस चीज के लिए नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि उन्हें छोटे से गरीब लोगों के लिए किया, अमीर को तो गरीब बना ही रहे। I'll give you an example, sir. ये सिद्धार्थ, I don't know, इसका नाम क्या है यार? Can you tell me ये gentleman what is his name? सिद्धार्थ मल्होत्रा। थैंक यू, सिद्धार्थ मल्होत्रा। ये भाई साहब विक्रम जी क्या बोलते हैं मालूम है ये मूवी के बारे में? ये देखो, ये एक स्क्रीनशॉट है ये मूवी का। ये पारिवारिक मूवी है क्या? एक बार देख लेते हैं अंकल क्या बोलता है। जस्ट वांट टू शो यू देयर आप ही जो है यूथ, वो जो देखते रहते हैं इंस्टाग्राम, उनको बोलो, उनको पहले क्वेश्चन पूछो, मोदी जी से भी क्वेश्चन पूछो और इनसे भी क्वेश्चन पूछो। ये भाई साहब देखो क्या बोलता है। Everyone, firstly, thank you so much for all the love for our Thank God trailer. Hello and namaste everyone. Firstly, thank you so much for all the love for our Thank God trailer. ये फिल्म हमने फैमिलीज के लिए बनाई है, तो इसीलिए इस फिल्म का ट्रेलर अपने फैमिलीज व्हाट्सएप ग्रुप में तो शेयर करना बनता है। तो अपने फैमिली के रिएक्शंस के स्क्रीनशॉट्स हमें भी,
और जो सबसे मजेदार रिएक्शन होंगे उसे मैं अपनी स्टोरी पे पोस्ट करूंगा, और बाकी some lucky winners might get a chance to win movie tickets and to meet the cast of Thank God. ये पारिवारिक एंटरटेनमेंट मूवी है, तो डिड यू आस्क, आप उसके इंस्टाग्राम में जाके आपने पूछा क्या कि ये कौन सा टट्टी है जो फैमिली वाला एंटरटेनमेंट मूवी है? दिस इज द काइंड ऑफ स्क्रीनशॉट्स इसमें है। 20 जून 2020 के बाद मैं कोई फिल्म ही नहीं देखने गया। इन लोगों को सिद्धार्थ मोतला किस कैटेगरी के इंसान है, इसको तो मैं देखने ही नहीं गया पहली बार। तो इनको क्या मैं देखने जाऊं? सी आपकी जीत हो गई है, उनकी हार हो गई है, बिकॉज आपका सी इंडिया में एवरेज एज ऑफ इंडियंस इज 27, यू नो दैट राइट विक्रम जी? तो आप शायद उससे भी यंग होंगे, शायद लग रहा है, बिकॉज सी 27 इज द एवरेज एज। तो आम जनता, दैट इज इंडिया, वी आर द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, and this is the kind of पारिवारिक entertainment these guys are giving us. If you are boycotting them, वो लोग जूते मतलब खाने के भी लायक नहीं रहेंगे, मतलब just खाना भी मतलब मिलेगा नहीं उनको। That's you are already winning, so just please don't lose hope. And Anam, welcome ma'am. Sorry you were coming second time, and yeah. Yes, sorry, I was just gone to my prayers, but hi Rachna, how are you? Hello, how are you? I'm good after a long time, and it's nice to see you with this session, and I'm just enjoying that. I hope you're watching my tweets as well, that I'm always tweeting for Sushant, and I'm not going to stop till we don't get justice, till we don't get the charge sheet as the sister wants, 302, and we have to keep rowing and supporting each other, and don't think about trolling that which Varun was going through, or telling him not to have it on his head, but because we will get divert our movement from divert our mind from our movement. So we have to keep being strong and being more all ignore all the negativity and be positive, and just being strong, that we one day will get 302, because if we do a longest movement, CBI will be able to give us the charge sheet that we want. So we have to keep rowing and keep supporting each other. That's all I have to say. Thank you. Thank you. Ma'am, just to add to whatever you said, this movement miraculously, instead of dying down with time, it's gaining momentum. That's unprecedented, I think. So like I said कि कोई दैविक कृपा है इस पूरे आंदोलन में, मैम, मेरे हिसाब से। Exactly. नहीं, exactly. नहीं, definitely, yeah, that is the power of his charisma, and that's the kind of person he is, and we are at least awake now, and we cannot go back. So see, I'm just showing you the trends of what is going to happen. Abhi Leonardo DiCaprio at 47 is dating 27-year-old Gigi Hadid. That is the kind of Hollywood bullshit that Hollywood megastars are doing. So we can just like imagine what Malika Arora Khan is doing with her life. We can imagine that kind of stuff coming to अभी ऋतिक रोशन भी डेट करेगा कोई 20-year-old को, तो उस टाइप का होने वाला है अभी। there's a lot of things that we'll have to keep on fighting. So this is the latest news, and people are just shocked and saddened कि मतलब कोई नहीं मिला क्या इसके एज ग्रुप में अंकल को? He has to hunt a 27-year-old down. It's just horrific. मतलब kind of bullshit that's happening here. Is another budao who doesn't think he'll get old. Exactly. Sorry, Chanakya Anand ji. Hello, sir. Welcome. I think. Hello, ma'am. Can you hear me? Yes, I can, sir. Thank you. Excellent. So I have been listening to this talk. मैं हिंदी में बात करूं या इंग्लिश में? So Hindi or English, anything, sir. Yeah. Okay. So there is a lot of misinformation that is being spread by many YouTubers who want to downplay this boycott movement which has started and really gain momentum. And they have done it in a very decisive manner. So I would like to convey through your medium this thing that first of all, people need to understand that boycott is a democratic right which is protected under the Constitution, under the articles. Even in US also, it is a most genuine recognized form of expression, freedom of expression under First Amendment as well.
Yeah. First thing. Second thing, people need to understand that there is a difference between boycott, ban, and cancel culture, and they are clubbing together to downplay this movement. Yeah. People need to understand that banning someone, we are not asking you to ban, we are not asking Amir Khan or anyone to ban their movies. We are not holding audience down to not go and see the movie. We are just asking them that you are allowed to do your films, and you are allowed to showcase it is as a consumer, because they are delivering a product, and as a consumer I do have a choice to not buy this product and even influence my family members, my near and dear ones, that you should also not use this product because this product is a rubbish product. Yeah. And we have every right to do so. The second is the cancel culture. Cancel culture is when you ask someone to deplatform just because of their political ideology or their sex or their creed or whatever. But we are not asking you to deplatform them. You are allowed to do your work. But we as a consumer have the right to say that we are not buying your product. You cannot force us. So these are the two things which, and third thing which right now the previous speaker was saying, that why this has gained momentum. People are saying boycott has always been there. So this time this is a very paid movement. It is not a paid movement. It is the most genuine sentiment of Indian public, which really got fed up. The thing is that yes, things have aggravated this situation. Boycott has always been there. People do have a complaint, but with the recent last 6-7 years, the democratization of voices and opinion have taken place. Everybody has now internet. Everybody has an opinion to share. It cannot be controlled by one vested group of interest, and hence you see these differing opinions arriving and with much force. And people are now collating with each other and expressing their combined force of this angst and complaints that they have. Second thing is that yes, after SSR, it was a big jolt. People always knew there were problem with Bollywood, but that really hit the peak for most of the Indian audience. We used to be Bollywood lover. Yeah. We used to be, in spite of those complaints, but we somehow suppressed it. But after SSR death, it really just shattered all the trust relationship that an audience and Bollywood has. And after that, then of course, Gems of Bollywood, which you also are featuring many a post, it has done awakening at a massive level. People started noticing the kind of narrative they want to portray, the kind of anti-India sentiment that they portray. They have nothing constructive to add. I would also suggest people to buy a book called written by Dheeraj Sharma, Filme or Sanskriti. It is available on Amazon. Okay. And he is a professor in IIM Rohtak. He has conducted a research. Based on this research, he have written this book. And what he have done is he have selected 50 most top movies from each decade, from 1950s, 60s, 70s, 80s, 90s, 2010, 2000 and 2010. So every decade he have done a good sampling, and he studied each of these movies, and you will be astonished to know the kind of research that the kind of things that he got is that he noticed that 58% of the corrupt politician in movie were always Hindu Brahmins. 62% of the corrupt businessmen were from Hindu Vaishya caste. In 78%, women with loose character happen to be Christians. You see all the sidekicks of a villain, Mona, or this kind of always the Christian woman, right? The women are with loose character happen to be Christian, and और 74. ट्रांसजेंडर के साथ भी इन लोग कोई अच्छा बिहेव नहीं करते मूवी में. Yes. They show them in a much, either in a funny manner or either in a very lowly manner. हाँ. No respect for them. Seriously. And 74% of the films present Sikh. और सिख कम्युनिटी को भी कभी लोग अच्छे वे में नहीं दिखाते, ये सिर्फ कॉमेडी वे में दिखाते हैं. सीरियस मोड में या किसी साउथ इंडियंस को भी आप देखोगे.
Yeah, Ma'am, South Indian style. is it a shampoo ad? Like, are they displaying the strength of the hair? No, this is the kind of videos that students are posting these days, sir. It's just so horrific. I just don't know what is happening to kids these days. They're fighting, and these are very common even in the US now. That kids are showcasing themselves as. Yeah, they have to be manly, right? Okay. Yeah, But just, what about what Chanakya ji was saying? I mean, a short while yeah, back. So I just want to add why I said like this movement has a divine blessing, because there are multiple factors for that. If you go in depth, you will find in plenty. But I'll just mention one. The kind of boycott movement the SSR fans were, pushing, and they were trending. This movement wouldn't have got this momentum if we didn't have that crap content in the movie. yeah, So yeah. that's why I say the crap content and third class acting plus big beef guy. So these all clubbed together, and fueled this fire of boycott. So everything is looking in sync, ma'am. If you ask me, it Hey, looks even so the organized. Alcoholia, that movie Alcoholia or some song is there. Hrithik Roshan ka supposedly went viral or whatever shit. And these girls are drinking. Supposedly this is from Tamil Nadu, and these girls are actually drinking alcohol, and they're just completely out of it, and they're eating something, and then they're this, and then we see songs like Alcoholia getting popular and everything. So I don't understand. It is kind of a drug that suppresses the brain and everything, right? So it's just so sad and horrific when we see all these things. But Sir They have Chanakya, normalized it. They have normalized exactly, it. exactly. Thank you, sir. Thank you for all your input. We're just trying to create that awareness, and as you said, we our knowledge is going to be our power, and the more मैम we आजकल ड्रिंक करना स्मोक करना लोग कूल समझते हैं बहुत ज्यादा And cool हो गया है, yeah. And Rashna, ma'am, I want to speak to your audience about this, especially young girls or teenagers or who are ladies who are in 20s. Never, ever think of getting drunk, because ma'am, there are incidents where some predator, Yeah. they take advantage of the situation, and they take pics in like that seem to be in Inappropriate, compromising, yeah, in yeah. compromising position, and they kind of blackmail. So once the girl is out of senses, I can't speak about it, but I don't want the women of this country or anywhere for that matter, to be in that kind of situation where somebody takes advantage of them, and because she's not into her senses. So Yeah, please but don't. the problem is all these ladies are normalizing that culture, right? They look at all these Bollywood wives or whatever shit, and then they come and do all these. I don't know if is somebody has compiled all these things, or all these women are paid to do all these kind of stunts, that they're so liberal, they're so woke and so feminist, like there's so much of freedom of choice and to do whatever they want. Ma'am, and what is this after party culture? Is it like, am I getting it right? What is this after party culture? I've heard about it. I hear a lot of things, sir. अभी तो एक बॉलीवुड नाइट हुआ था, हमारे फ्रेंड्स जो गए थे, people came back at 5:30 in the morning. I don't know, I just can't say anything out here, but yeah, just very sad to hear. Behanji turned moderns, all of them just taking a glass in their hand is a sign of like freedom. That's the kind of. And ma'am, since we spoke about Belarusian and Ukrainian women coming, to dance in backstage, but you'll be Yeah, so astonished to know yeah, that so many from that region, particularly women, they are converting into Krishna devotees also. yeah. So it's very good to see they're dancing to So, tunes of Hare Krishna. ma'am, what is happening is basically that yes, they after seeing any kind of this movie and constant barrage of this movie, which normalizes this kind of behavior, and Yeah. it really says that it is your freedom of choice. Exercise it, you will feel that
force of freedom within yourself and within you. So they get influenced, and they, because they think it is normal, they try to do this. Once they try to do is, and when they post this kind of post on Instagram and viral, this same kind of celebrity and will give cheers for them, and it will boost them that yes, they are doing such a great thing, they will all power to you, go, you go Exactly. girl, and this kind of thing. You And go it girl. further reinforces, you go girl. आप कहाँ के हो सर, चाणक्य जी? सर मैं बिहार ओके, ओ रॉकी जी का नेबर, ओके, नाइस नाइस. Hello, bhai. Hello. Good to know. and they will reinforce this kind of behavior, and they think that yes, I'm doing something good, I'm doing something, I'm doing such a great job that people will idolize me, it will help me to gain popularity, and for a short while they do get popularity, and because of this they really feel that they are doing good, and they further so they infect the society as a whole. ये निधि चौधरी, I'll just tell you, it's not just celebrity culture, right? Just saying. Yeah, she's an astrologer. I know. I was like, ये कौन है भाई? Finally, my prayers have worked for Virat Kohli. It seems ऐसे नागिन की तरह डांस कर रही है, चुन्नी कहाँ है मालूम नहीं है, but दीदी बोलती है, इतना ये वायरल वीडियो होने के बाद, she says, it seems I get many offers for movies, TV series and music videos, but I don't do them because I don't want to do it. बात खत्म. तो Oh, ma'am, actually, no, wait, ma'am. She was trolled on Twitter. I don't know, for some strange. Okay, now I get it. Thank you. That's why your streams are so informative. She was trolled very heavily on Twitter some time back. But Rasna, ma'am, a quick question. You are also a Putohu of Bihar, right? You know what is a Putohu? No. Daughter-in-law. Yeah, daughter-in-law. Yeah, yes, sir. But okay. Yeah, आज का अर्जुन चाणक्य आनंद क्या बात है, आज तो पूरा नहीं, ये दीदी एक्चुअली बोलती है, एक सेकंड सुनिए. आपने कभी नोटिस करा है कि आप अपने पैसों को किस तरीके से रखते हैं? क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है कि अपने पैसों को कहीं पर भी ऐसे ही फेंक के रख देते हैं, किसी टेबल पे रख दिया, किसी भी ड्रॉर में रख दिया, बैग में रख दिया, और ये भी नहीं देखते कि किन चीजों के साथ वो पड़ा है, क्योंकि उसकी एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है उन चीजों के साथ. जैसे दवाइयों के साथ है तो पैसा दवाइयों पे खर्च हो सकता है, बिल्स के साथ. So first time this Didi was talking, I did not hear a single word of it because I was focused somewhere else. I was like, ये क्या ज्योतिष शास्त्र बोल रही है कि मतलब कुछ कपड़े ऐसे क्यों हैं इसका? I was just like so confused when I saw, like, but there is no restraint or anything on social media, and freedom of speech के problem की वजह से people are just doing whatever they want. It's just unfortunate, but yeah, she's the one. Ma'am, if you notice the pattern, if you will see that why this time the boycott movement has really generated force, is you see there was a movie which came out, Kashmir File, right? Yeah. And when the Kashmir film came out, people have seen this, that entire Bollywood has boycotted this and tried to even suppress this movie, try to limit the screen size. But after you see the kind of footfall it started getting, and the movie ticket theater owners, they realized that it is a good way to mint money, and they started increasing the screens in spite of ideological differences. And it has been seen by millions, right? Now, those millions do understand that. And these were movie going crowd. So most of the time you will see, not everybody goes to the movie. There is a certain section of population only which actually goes to the movie. And those are their target audience. Mouth publicity के कारण movie hit हुई थी. So now because they have seen the movie, they have connected to the movie, and they have also seen this hypocrisy, Bollywood, very clearly, that entire Bollywood has distanced itself. So now they do understand that they are not standing with us. And now they have, because of this awakening and the connection that they feel and how they have seen that they have boycotted it and speak ill will about it, now people have really realized, and those were the prime target audience who actually goes to movie. Most of them does not go to movie. सर अभी आपने देखा कंपैरिजन करने लगे, अब ब्रह्मास्त्र क्या बोलते हैं, कश्मीर फाइल
फायर से भी ज्यादा सुपर हिट हो गई है, उससे भी ज्यादा कलेक्शन कमा ली है। उस मूवी का बजट और अपनी मूवी का बजट कभी भी नहीं कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन उससे आगे पहुंच गई मूवी। हाँ हाँ, वो पहुंची कैसे, वही मैं जानना चाहता हूँ कि वो पहुंची कैसे। अरे भाई आप लोगों को सर पता नहीं है, उनका बजट कितना कम था ये भी तो पैरेलल देखिए। यूनिवर्स में भी मूवी हिट जा रही है। तो एलियंस एक्चुअली द थिंग क्या है कि इन लोगों को ना इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, फिनेंस का कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है कि कुछ टर्म होता है कि भैया एब्सोल्यूट रेवेन्यू पे कोई चीज जज नहीं होता है। इट हैज टू बी जज ऑन द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI, व्हाट इज योर इन्वेस्टमेंट। कलेक्शन नहीं बता वो रहे। ठीक है, मैं समझ हाँ। रहा हूँ, लेकिन 360 तक जा कैसे रही है? नहीं जा कौन सकती दे है, रहा है? ये नहीं जा कौन दे रहा सकती है है वो बिकॉज 360 करोड़ रुपए? and you need to also understand, अब ये ना अपने बजट को भी they are trying to downplay the budget. सर Now हाँ, you see, आधी जगह 350 करोड़ रुपए आने लगा बजट। हाँ, because you see movie budget is not only the production cost, the VFX cost is a post production, then there is a promotional cost. They have spent huge this time, 100, I think 100 and 150 crores promotional cost. हाँ हाँ, एक और चीज बिफोर आई फॉरगेट, अभी थोड़ी देर पहले कोई तो यहाँ पे बात कर रहा था अबाउट यूक्रेनियन एंड बेलारूसियन डांसर्स इन द बैकग्राउंड। हाँ, ये आप लोगों को शायद पता नहीं है, लेकिन ईस्टर्न यूरोप स्पेशली बेलारूस is very well known. It is actually the highest number of women's trafficking is done from Belarus and all these places. So how many of the background dancers are background dancers and how many of the background dancers are or background whatever that Firangi ladkis are trafficked women? I think we should sort of look at that, because these are the countries where the women are trafficked the most, because organized crime वहाँ पे transnational mafia बहुत ज़्यादा active है, especially in the trafficking of women and children, and these are the countries where the trafficking happens the most, Belarus especially. That is so people were talking about Bollywood filth, so I thought ये भी थोड़ा fact add one करना more चाहिए in the public interesting domain. fact. One more interesting fact, in that same Dheeraj Sharma book, who is a IIM professor, so he have also studied 20 Bollywood films which were released simultaneously in India and Pakistan, and the finding was that 18 of them presented Pakistani people as a welcoming, courteous, open-minded, and courageous. On the other hand, yes, they presented Pakistani government as fundamentalist, unwelcoming, and jingoist. However, in the same movie, Indian were largely presented as a narrow-minded, unwelcoming, and conservative, and because of this thing, the conflict is going on. So my question is a simple thing. ये मैं देख रहा हूँ, हिंदू पीपल आर कंप्लेनिंग कि बॉलीवुड ऐसा है। हाँ, कुछ सोसाइटी में कुछ पीसफुल लोग हैं जो हमारा मतलब लड़कियों को उठा के ले जा रहे हैं, गला काट दे रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि व्हाट विल इट टेक फॉर हिंदूज टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। ठीक है, ये इतने मैं आई वाज हैविंग अ कन्वर्सेशन विथ माय पेरेंट्स द अदर डे एंड आई आस्क्ड देम कि this is Bollywood has got to this level because your generation and the generation before that said सब कुछ चलता है. So that is the problem कि if the previous generation said सब कुछ चलता है, that is how this has come to this point, और हम अभी हमारे generation के सर पे आके बिल फटा है. नहीं, एक्चुअली सब कुछ चलता नहीं है, एक्चुअली ऐसा नहीं है। देखो 1947 में व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ना, यू नीड टू अंडरस्टैंड, and this is my personal opinion, that is that Hindus never got the independence. We have been subjugated constitutionally. देखो, right? नहीं, I disagree. मैं एक चीज बता दो क्यों. Let me present my point. वो हाँ, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ. समझ रहा हूँ, नहीं, that is a very interesting point, I understand, and it is a serious point, but the fact is that is not a good enough justification to feel that your faith can be mocked and ridiculed and demeaned and belittled. No, because our parent has been conditioned to that. Na, you see, we have been subjugated in constitutionally,
legislatively, executively, judiciary even. So now the entire education system, because of that, our parent is a product of the education system and the kind of environment around us, right? So were your because parents born before or after independence? after independence, so what I'm saying is that they have been conditioned through all of this to say that it is okay if somebody ridicules our faith. It's okay if somebody handles kid gloves to other religion. That's okay. And we have been made to do this now अच्छा because of the flow of the information. Now people have अच्छा started questioning. that is one question. Why are Hindu parents allowing their daughters to roam around with certain peaceful community people? What is the reason behind that? If we were Ignorance. colonized, अच्छा ignorance. They are seeing so many girls being No, they don't see. trafficked. You see, What are you talking about? नेशनल न्यूज में पिछले 8-10 साल से आ रहा है कि लड़कियों को जला दिया गया है, काट दिया गया है, पेड़ों नहीं, से नेशनल न्यूज लटका में दिया ना, गया है. नेशनल न्यूज में आइडेंटिटी जो है बहुत डाउन प्ले किया गया. अगर वो पेरेंट्स या दैट गर्ल इज ऑन ट्विटर, आई एम प्रीटी श्योर शी विल नॉट बी फील ट्रैप्ड. Many people are not. I agree a little bit with Chanakya ji. आज का अर्जुन जी, see, we are talking about थोड़ा बहुत educated elite people who are on Twitter and everything, who know all this stuff. I'm not talking about people, elite stuff. 98% of people who are, see, 0.004 or something percentage of India is on Twitter or something like No. right? That is not the point. The point is, वो जब एक याद है कुछ साल पहले एक cow lynching हुआ था. There was this one fellow who was stealing his neighbor's cows. हाँ. So उस केस में, हाँ. Yeah. That case demonstrated, and I know for a fact that on the ground, especially in small town and rural India, people are extremely conservative. But point क्या है ना कि when there was this one political commentator called Ajit Bharti, he was talking about his own village. So there was a targeted attempt to sort of bhekau girls from his village by the neighboring Muslim boys from the Muslim village next door. So what ended up happening was, when the boys of the Hindu boys went and complained to the girls' parents turned around and उन्हीं हिंदू लड़कों को डांट दिया. That is one case. हाँ, फिर जो होना था हुआ. Another case I'll tell you. This is a more disturbing case. One peaceful fellow कहीं तो एक कॉलेज लड़की को बड़ा मोटरसाइकिल पे घुमा रहा था और लड़की भाग गई. तो उसके क्लासमेट्स हिंदू बॉयज when they attempted to sort of explain to her what was happening, she said, oh no, you people are jealous, that's why this, that. तो उन्होंने बोला ये कि देखो ये तुम लोग तुम्हारे साथ जो करेगा वो करेगा. So that what that peaceful fellow did was, that peaceful fellow took photos of her and started blackmailing her. अब ये लड़की रोते रोते हिंदू लड़कों के पास आई कि देखो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं. तो इन हिंदू लड़कों ने जाके उसको पीट दिया. हाँ, अब्दुल को पीट दिया. उसके बाद ये हिंदू लड़की ने इन हिंदू लड़कों पे पुलिस एफआईआर कर दिया. कैसे मार दिया मेरे अब्दुल को? ब्लैकमेल कर रहा था उसे. Hey, we saw that acid attack. See, the question. So basically, the question of your question is, how is there no awareness still and all that? Yes. Because it's been. And this is the same mindset which is connected to people, Hindu people accepting movies abusing their faith. It is the same mindset which leads people to not being mindful about where their sons and daughters are doing. Okay. No, they're roaming around with. It is the same mindset. The reason, if you will see, is much deeper. Look, there are some. Let me finish. Okay. Let me finish. Now the fact is, there was this very good talk given by there's this lawyer from UP who gave this very good talk, and in that talk he said, historically what was wrong was, and I've said this before also, that a Hindu community, when the invaders used to come, Hindu community used to tell the kings that we will do trade, we will do commerce, we will do arts and culture
fighting is your job. Okay, so the kings tried as much as they could, and one day the kings lost. And when the invaders came in, and then फिर मीना बाजार लगने शुरू हो गए. हाँ, and there used to be genocides, and फिर universities को तोड़ा. So this attitude कि हम आर्ट्स करेंगे, कल्चर करेंगे, इन सोसाइटी में भाईचारा करेंगे, गवर्नमेंट का काम है आक्रांताओं से लड़ना, गवर्नमेंट का काम है आस्तीन के सांपों से लड़ना, गवर्नमेंट का काम है हिंदुओं के दुश्मनों से लड़ना. ये गवर्नमेंट का काम नहीं है, सर ये हमारा काम है. ना हिंदू का ही दुश्मन है, पहली बात. वो तो कभी मैं चेंज नहीं हो सकता. यही कह रहा हूं कि यही तो है माइंडसेट दैट लीड्स सर आप अस एक चीज टू मैं लुक बताती द हूँ अदर वे. कि सर क्या होता है, आप यदि किसी के लिए खड़े होगे ना और आप उसके सपोर्ट में खड़े होंगे, लेकिन वो पलट जाएगा, एंड टाइम पे पलट जाएगा. यहाँ मारपीट लोग इसीलिए तो आज लोगों को कोई मारता है तो लोग खड़े नहीं हो रहे, क्योंकि हम पढ़ेंगे तो ये हमको फंसा देगा. नहीं, उसके पीछे मैं एग्जैक्टली बता रहा था. देखो, ये जो आपने बताया ना कि हिंदूज का काम नहीं था, वो तो गवर्नमेंट के ऊपर डाल देते थे. देयर इज अ रीजन, बिकॉज इवन व्हेन द किंग्स गो ऑन फाइटिंग विद इन इंडिया, हाँ, हिंदू किंग फाइट्स विद अनदर हिंदू किंग, देयर वाज a set of code that they follow, that all the civilians won't be involved in the war, and that is how they have been conditioned that we have nothing to do with the war. It is between the two kings. Whosoever will take place, that will not affect our common civilian life, and this is the code that they used to follow. एक मिनट, let me complete some of the points that you have mentioned. हाँ, तो जब they have been termed as Malechas, right, those invaders, because they were barbaric and uncivilized. So Malecha is another term for, and we were not Satru Bodh की कमी थी. Yes, I do understand that we did not recognize the main enemy and the ideology that they are coming with, and we thought that it is going to be another fair fight, but they don't have any rules laid down for war, right? And that's why they will invade into civilians also. They will kill and rape and butcher and molest women and take them as a sex slaves, and this all things has started happening. And yes, the second thing is that कि हमारे जो मैम ने अभी दीदी ने बोला ना, what she said कि हिंदू का दुश्मन है, and this, yes, to some extent इसलिए है क्योंकि हमारे पास ना हमारे पास एक स्ट्रक्चर ही नहीं छोड़ा जहाँ पे कि यूनिफाइड वॉइस हम अपना रिप्रेजेंट कर सके. वही तो मैं बोल रहा हूँ. एक मिनट. तो हमारे पास क्योंकि स्ट्रक्चर नहीं है, द टेम्पल इज नॉट विद इन हिंदू कम्युनिटी कंट्रोल यार. The government has a control. That is the only place we can congregate, and we can raise our voice and be a unified voice. नहीं, ये unified voice वाला attitude अब नहीं चलेगा. वही तो मैं कह रहा हूँ. The only thing I'm saying, एक मिनट. The only thing, the only thing that is happening now is we have to focus. ठीक है? If required, I mean, we have to boycott, ठीक है, ये सब social movements चल रहे हैं, but we have to focus on the safety of our children, okay, boys and girls, and we have to focus, and the one thing we can do is, if you can't do violence, the one thing you can do is teach your children well, okay, about the Shastras and our scriptures and our faith. If you ground them from a very young age in a non-dogmatic way, which is very important. If you ground them from a young age in sadhana, in seva, in sankirtan, in the three basic values of satya, ahimsa, and asteya, then that is one social dimension of fighting. But the fact is, अगर शास्त्र हम पढ़ सकते हैं तो हम शस्त्र भी उठा सकते हैं. And that background has to be there. That also, that street power, जो पॉलिटिक्स में स्ट्रीट पावर जिसे कहते हैं, वो भी बिल्ड करना बहुत जरूरी है. एंड वो मोहल्ला लेवल तक ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा.
सर एक चीज है, And इनका that goes before See, movies also. unfortunately, that mindset, I don't know. I just cannot. That sentence, I don't know. It's just too. The thought itself is very. Okay, whatever. This is the public mandate you're speaking. It's okay. It's your democratic right to speak. So, but yeah. मैम मैं एक बात ये बोलना चाहती हूँ, देखो यहाँ पर ऐसा है, इनका जो है कि बहुत क्या बोल रही थी मैं, हमें जातियों में बांटा गया, जबकि जाति उस कम्युनिटी में भी है, लेकिन हमको अलग रखने के लिए जातियों में बांटा गया। फिर उसके बाद आपस में जाति जाति में ही लड़ रहे हैं लोग। यूनाइटेड होने के लिए ना हमारे पास एक दिन है, ना जैसे क्रिश्चियनों के पास एक दिन है कि वो लोग यूनाइटेड होते हैं, एक जगह इकट्ठा होते हैं, मुस्लिम भी एक जगह इकट्ठा होते हैं, सिख के पास भी है यूनाइटेड होने के लिए, लेकिन हिंदू कभी यूनाइटेड होता ही नहीं है किसी। और इन लोगों का इकोसिस्टम इतना स्ट्रांग है मैम, इतना स्ट्रांग है। अपन ने इकोसिस्टम ही स्ट्रांग नहीं है ना। हम किसी को डोनेशन करते थे तो इन लोगों ने हमारे दिमाग में ये फेड किया कि डोनेशन नहीं करो, मंदिरों में दान मत दो, इधर ये बाबा लोगों को let me दान मत blow दो। your mind, ma'am. Let me blow your mind a little bit about. आपको, will it surprise you if I tell you that jati system is only 600 years old? नहीं, उससे पहले से है। नहीं, it isn't. The caste system came in with the Portuguese, and this is, historians have done work on this, and there are people who have written books on this, and very respected people, respected academics, respected scholars have written books on this. Caste system came in with the Portuguese. The Portuguese came up with this word. The word casta, caste comes from casta, which is a Portuguese word for social class. They divided the society into social class first in India. That system was picked up by the British, who did a caste-based census in the 19th century. They did several caste-based censuses, and then they gave jobs to certain castes just to create division, and benefits to certain castes to create divisions in certain. Arakshan diya gaya. Now, which was carried on forward by the Indian government after independence also, that is whatever. But the caste system, as per information that is readily available and freely available on the internet, and otherwise also work done by scholars. I'm not even talking about journalists or blogs. I'm talking about scholars. Yeah. Caste is at most 600 to 650 years old, and whatever mentions of caste you find in the scriptures has been added by colonial era mercenary scholars who were hired by the British or the Portuguese or by the missionaries to dilute our scriptures. Yes, those were extrapolation. Even if you will search on internet, William Robert Cornish was the person who conducted this Madras Presidency caste census, and in after he have done the caste census, he have specifically mentioned that regarding the origin of the caste, we can place no reliance upon the statement made in the Hindu sacred writing. Whether there was ever a period in which the Hindus were composed of 4 classes is exceedingly doubtful, and same way as repeated by C.F. Magrath, who have done the BR monograph of caste census. No, but that didn't stop them from propagating the caste thing. The fact of the matter is, caste is at most 650 years old, and that's why any time people mention that we should move towards a casteless society, it should be followed and it should be supported, because our country now needs to move beyond these divisions. अच्छा, आप ये क्लॉडिया वेब की बात कर रहे हो मैडम, ये मेरे घर लेस्टर मेरे घर से 2 घंटा दूर है। ये मैडम बहुत ज्यादा लेफ्टिस्ट है, ये बहुत ज्यादा लेफ्टिस्ट है, ये एमपी है फ्रॉम द लेबर पार्टी। यूके में कितना भयंकर हुआ, लेकिन ये सब यूनाइटेड होके सर एक लोगों ने पोस्ट डाले थे कि हमें सबको इकट्ठा होना है इन लोगों के खिलाफ, सिख कम्युनिटी और क्रिश्चियन कम्युनिटी और ये सब मिलके इनको टारगेट करेंगे, टारगेट कर करके माना। और ये वही लेडी है ना जो कि जेल भी हुई थी, शी इज ए कन्विक्टेड क्रिमिनल ना? No, I don't think so. Yes. Yes. Is this the one?
She done physical harm to some ex girlfriend of his husband or boyfriend or something, and she physically assaulted her, and that's why she have been thrown out of party लेफ्ट पार्टीज में ऐसे पागल लोग ही जाते हैं. and she was convicted criminal. So we are from convicted criminal to back to Arjun Kapur. No, I'm just kidding. No, see, these kind of see, the public mandate is this, that we are discussing, we are coming out in the open and talking and everything. But the problem is we are not able to reach a middle ground, because either we are too far on extremes to not even have a handshake or a dialogue. That is the problem. And baki sab to yaar, we are taking advantage. Some people are taking advantage of the people who don't have enough education on all this, right? So you can see all the children who are getting brainwashed, and all the violence, and abhi aapke ghar ke paas jo violence ho raha hai and all that is just so just sad. Actually, state ma'am, of affairs. सर आप वही एक्चुअली हो मैम ये क्या? जो फोटो है ये मैं यूके में ही हूँ. Actually, this photo is Arjun Kapoor trying to infiltrate Hindu society to assassinate Hindus who are boycotting the film industry. Yeah. Serious topic say okay. So okay, no, I'm just saying. Silent but deadly. Silent but deadly. I know. Also applicable to farts. Exactly. I was going to say podcast. No, I just want to. I'm sorry, I have to go, but see, we can continue this, sir, Chanakya ji, and I'm happy that Ajka Arjun ji also joined our forum when you are here. Chanakya ji, it's just nice to have a conversation, and I was so happy that Vikram Rajput ji and everybody joined today. You know, this is the kind of. The whole point was, Varun created this so that we can have this dialogue and see how the world was changing, and how we are, we can feed off each other's energy and make this place a better place to live. So this is great. Thank you, ma'am. One last appeal I would make to everybody on this panel and everybody who's watching or ever watches this video is that अब self interest वाले lives हमने बहुत जी लिए. अभी थोड़ा लाइफ थोड़ा ideology के साथ जीना है, because ideology is the only thing that is going to protect us. Our belief systems are only going to protect us, and the way we protect our belief systems is going to protect us. Dharmo rakshati rakshata. So we have to become a little ideological. There is a very good saying in Israel. You know, every Israeli is taught this saying. They have been taught that if our enemy will lay down their weapon, then there will be peace. But if we will lay down our weapon, there will not any existence of Israel. The Israel won't exist. And that is why we need to armed with facts. We need to armed with intellect. We need to at least make a statement, reach out to the public. Yeah, very good, very good. Thank you, sir. That is amazing. That's amazing. Yeah. Sir, Ajka Arjun ji, this is for your entertainment. This is purportedly a church in Chennai. And ये लोग इतने जाहिल गवार है ना, ये पादरी लोग इतने जाहिल हैं. ये पादरी लोग इतने जाहिल हैं, इतने अनसिविलाइज्ड हैं ये लोग. इन लोग को कुछ नहीं आता. एक ही किताब पढ़ा है जीवन में और वही करते रहते हैं. एक किताब लेके और उल्लू भंडा, इसे कहते हैं भंडासुर. हनुमान जी शैतान बन के आए हैं. नहीं, एक वीडियो वायरल हो रहा था, धर्मांतरण में हनुमान शैतान है. अगर हनुमान शैतान है, मैं क्वीन ऑफ इंग्लैंड हूँ. And not one Bollywood movie you will see which will make mockery of this mockery that is going on. Yeah, exactly. Okay, so we'll conclude with this gentleman here. Yeah. Yeah, I love this song. No, this is for everybody who is trying to make us choose. No, see, Christian faith ko we cannot say anything, but the people who are trying to convert for their own gains are the choose. Yeah, here, right? We should not say anything against their God or Jesus Christ. Jesus Christ was a yogi, but what we should say is the church, any church, is a corrupt, immoral, criminal organization which operates like a mafia.
और सर ये लोग 10% मांगते हैं, उसके बाद अपना कमाई का 10% यहाँ डोनेट करो। वो लोग वो 10% That is a compulsory donation that they ask. Otherwise, वो they उनका will वो उनका deny ज़कात है, सिर्फ वो उनका धर्मांतरण ज़कात इसी है, चीज के लिए हो रहा है और किसी और चीज के लिए नहीं हो रहा है। वो उनका ज़कात है, अब क्या करें। So एक आंटी और एक अंकल का वीडियो प्ले करके just conclude giving a message to all the so ये एक्चुअली मेरी फेवरेट पाकिस्तानी दीदी है। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। तो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, दच्चोत के बच्चे इतने पटी के ये बड़वे। So this is for all of us. the famous meme. Very This is the best. This is the best. आदमी अच्छा है सुनने के लिए मरना पड़ता है, आदमी अच्छा है ना? Rest in peace, Bollywood. आदमी अच्छा है सुनने के लिए मरना पड़ता है। I know. Okay, thank you विक्रम जी, चाणक्य जी, ज्योति जी, आज का अर्जुन, thank you so much. Thank you. We hope we will see Thank you, Bollywood in ma'am. museum someday. Yes. आदमी अच्छा था सुनने के लिए मरना पड़ता है। विक्रम, good job sir. See you soon. Bye. जोक्स Good क्या? night, ma'am. इसमें जितने लोग डिबेट Good में आते night, हैं, क्या ma'am. सुशांत राजपूत का हर फिल्म देखे हैं? अभी तो राधे राधे सबको, राधे राधे। नहीं विक्रम जी, no, we cannot lose hope. Thank you. See sir, okay, we are not talking about people who are from the Catholic Church who are you're Christian Catholic. We're talking about these fake conversion pastors who are trying to do these things. So please, there is a line, and I have 1,000 Christian friends, and I respect them and I honor them and support them. So please don't take it otherwise. Yeah. Okay. Thank you, guys. Bye. Thank you. Bye. जय श्री महाकाल, जय Thank you, माता। Jyoti.